जनाब, अभी गुलपोशियों का आगाज होगा। हमारे हरदिल अजीज जनाब टी हरीश राव साहब मिनिस्टर और महमूद अली साहब, मैं गुजारिश करता हूं जिस चेयरमैन का नाम लिया गया वो आगे आए और कुर्सी पे बैठें और उनकी गुलपोशी होगी। सबसे पहले जनाब मुजीबुद्दीन साहब, चेयरमैन से गुजारिश करूंगा कि आगे आए गुलपोशी के लिए। जनाब मुजीबुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ फरमाए ताकि आपकी गुलपोशी हो। हमारे क्या हुआ हमारे क्या हुआ भाई? ये जनाब मुजीबुद्दीन साहब है, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब मसीउल्लाह खान साहब, चेयरमैन वक्फ बोर्ड। जरा आप लोग पीछे हटिए प्लीज, जरा सलीम भाई थोड़ा पीछे हट गए तो थोड़ा पीछे। जनाब मसीउल्लाह खान साहब, यहाँ इतने में मत ठहरिए भाई। भाई आप लोग इतने लोग मत ठहरिए, दोनों ठहरे। जनाब सलीम साहब, ज्यादा लोग मत ठहरिए, आप जरा पीछे। उर्दू हज कमेटी चेयरमैन जनाब सलीम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ फरमाए। जनाब रविंदर सिंह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आए। अरे एक मिनट थोड़ा। जनाब राजीव सागर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ फरमाए। तनवीर भाई, जनाब तरवीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जो है ना, जी भाई अभी कुछ भी नहीं साहब, प्लीज अभी पहले ये हो जाए। जनाब इम्तियाज इसाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हो गया। जनाब तनवीर साहब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए। हो गया इम्तियाज भाई। जनाब तनवीर साहब,
मैं तमाम चेयरमैनों से गुजारिश करता हूं कि स्टेज पे थोड़ी देर रुकिए, आपके ग्रुप फोटो लेने का है। अपने फूल और शॉल मत निकालिए। जनाब तनवीर साहब, जनाब एमपी रंजीत रेड्डी साहब का इस्तकबाल करता हूं। जनाब तारिक अंसारी साहब नहीं आए, ओके। जनाब मौलाना यूसुफ जाहिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए। मोहतरमा शाहीन अफरोज साहिबा, मैं तमाम चेयरमैनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, खासकर हमारे हरीश राव साहब को, हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को, वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब को, जिन्होंने अक़लियतों के लिए ये पोस्ट दिए हैं। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और इस मीटिंग का आगाज किया जाता है। मैं जनाब एमएलए शकील साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। हारा निकाल दिया ना जी, हारा निकाल दिया ना। जनाब शकील साहब एमएलए बोधन से गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जरा बैठिए, मुझे पे बैठो बोलो। डायस पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत माब होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब, आली जनाब इज्जत माब फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर, टीआरएस पार्टी की जान और स्पाइनल कॉर्ड हमारे हरीश राव साहब, आली जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी साहब, आली जनाब इज्जत माब एमएलसी फारूक अहमद साहब, फारूक हुसैन साहब, और आली जनाब इज्जत माब हमारे बड़े भाई नागेंद्र साहब एमएलए साहब, चेयरमैन हज कमेटी जनाब सलीम साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी जनाब मुजीब साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इसाक इम्तियाज साहब, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब, और कौन है, जनाब आली जनाब मसीउल्लाह साहब, वक्फ बोर्ड चेयरमैन सरदार रविंदर सिंह साहब, चेयरमैन राजीव सागर साहब, तनवीर अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब, और हो गया ना सर, कोई मिस हो रही है, अकबर हुसैन एक्स चेयरमैन साहब, डायस पे तशरीफ फरमा टीआरएस पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्जेस और तमाम कायदीन, यहाँ पे बड़ी तादाद में आए हुए टीआरएस पार्टी के कारकुन, हमारी बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़े खुशी की बात है कि रियासत तेलंगाना में इतने सारे माइनॉरिटी चेहरे जो एक कैबिनेट रैंक हासिल करते हुए आज जो चेयरमैन बने हैं, ये बहुत ही कम हुकूमतों में पूरे हिंदुस्तान में एक तेलंगाना रियासत एक ऐसी मिसाल है
जिसमें आली जनाब इज्जत माब केसीआर साहब की जो जद्दोजहद माइनॉरिटीज के लिए, खुसूसी तौर पे अक़लियतों के लिए उनकी जो सोच है, अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सारे चेहरे जो चेयरमैन बन के आपके सामने उभरे हैं। रियासत तेलंगाना आए बाद पूरे हिंदुस्तान में पहली ऐसी रियासत होगी जहां पे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान को दिया गया है, उसके साथ रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा, उसके बाद होम मिनिस्टर का ओहदा। तो ये केसीआर साहब की कारकर्दगी जो अक़लियतों की बहबूदी के लिए जो की जा रही है, आप तमाम लोग देख रहे हैं। आप तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों से मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में आज अक़लियतें अगर महफूज है तो रियासत तेलंगाना में महफूज है। आज दीगर रियासतों में देखिए, आज महाराष्ट्र रियासत में बीआरएस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमारा काम वहां पे जारी है। जब हम महाराष्ट्र जाके देखें तो वहां पे मुसलमानों की या दूसरे क्रिश्चियन या सिख माइनॉरिटीज की कोई तरीके से कोई रियासत में भी हिफाजत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखिए हिंदुस्तान में जिस तरीके की दहशतगर्दी भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि आज एक मुस्लिम चेहरा, एक चेहरा रखने वाला इंसान रात में अकेले जो है फिर नहीं सकता। यूपी जैसी रियासत में, हरियाणा जैसी रियासत में कोई भी एक चेहरा रखने वाला इंसान अगर रात में 2 बजे घर के बाहर निकल जाए तो उसके घर के वापस होने की जो है पूरे घर वाले दुआएं कर रहे हैं कि वो खैरियत से वापस आ जाए। तो इस तरीके की दहशतगर्दी है। लेकिन आज रियासत तेलंगाना जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो माइनॉरिटीज की हिफाजत कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत एक मिसाल बन के रह गई है। अगर मेरी मिसाल ले ले, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब के बाद हरीश राव साहब, आज मैं एमएलए हूं तो हरीश राव साहब की जिद्दोजहद थी। हरीश राव साहब का यह था कि हमारे पास मुस्लिम एमएलए रहना जरूरी है। केसीआर साहब का मानना यह था और हरीश राव साहब का मैं तहे दिल से तमाम आवाम के सामने, रियासत के तेलंगाना के तमाम लोग देख रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के बाद केसीआर साहब और हरीश राव साहब का खुसूसी तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जो उनकी जद्दोजहद मेरे को एमएलए बनाने में थी। आज 2 बार आप लोगों की नुमाइंदगी करने का जो मौका मिला, उसमें हरीश राव साहब का बहुत बड़ा रोल है। आज तनवीर को यहां पे जो चेयरमैन दिए, हमारे साथ काम करने वाले फरीदुद्दीन साहब जो एक सीनियर कायद थे, एक वक्फ मिनिस्टर थे, सीनियर मिनिस्टर थे और बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छी शख्सियत, अल्लाह मरहूम को जन्नत नसीब करे, उनकी मगफिरत करे। आज जो है तनवीर साहब को जो चेयरमैन देके उनके खानदान के साथ जो इंसाफ किया गया है, उसके लिए हरीश राव साहब का और केसीआर साहब का मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इसके अलावा रियासत तेलंगाना में जो अक़लियतों के लिए फलाही बहबूद के जो काम अंजाम दिए जा रहे हैं, आज जो है उलेमा इकराम के लिए, जो उलेमा इकराम की जो हालत है, जो आज मस्जिदों में कई ऐसे मस्जिदें हैं जो उलेमा इकराम की तनख्वाह नहीं दे सकते, ऐसे उलेमा इकराम जो अपने सीने में कुरान शरीफ लेके चलते हैं, वैसे उलेमा इकराम को आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मुआवजा 5,000 रुपए का दिया जा रहा है, मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हरीश राव साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, पूरी रियासत में पैसे देना मिनिस्टर साहब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बोधन में भी काफी जो है साहब की मदद हर तरीके से रही है। मैं साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उलमा हुफ़ाज को जो 5,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है, उसको कम से कम 8,000 रुपए करिए, आपसे हमारी अदबन गुजारिश है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो 1 लाख रुपए भी अगर आप दे रहे साहब, मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा तादाद में, क्योंकि माइनॉरिटीज में ऐसे कई नौजवान हैं जो बेरोजगार है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई लोगों का जो बुनियादी तौर पे एजुकेशन हो रहा है माइनॉरिटीज का, बहुत अच्छा हो रहा है। हजारों बच्चियों की शादियां हजारों करोड़ रुपए देके जो माँ बाप अपनी गरीब बच्चियों की शादियां नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब की मेहरबानी से हजारों बच्चियों की शादियां रियासत तेलंगाना में आज हुई है, 1,116,000 रुपए देके। उसके अलावा
कई पेंशन रहने दीजिए, कई जो है जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो हामिला औरतें हैं, उनको भी 13,000 रुपए दे के आज हुकूमत हर तरीके से संभाल रही है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मेरी एक अदबन गुजारिश है, बहुत सारा यूथ रियासत तेलंगाना में जो माइनॉरिटी यूथ है, बेरोजगार है साहब, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे तो 1 लाख सही साहब, बिना बैंक सब्सिडी के, बिना बैंक लिंकेज के वो 1 लाख रुपए मुकम्मल तरीके से हमारे नौजवानों को दिए जाएंगे तो रोजगार में बहुत बड़ा इनको जो है बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। और इंशाल्लाह हरीश राव साहब से उम्मीद है, क्योंकि वो एक ऐसे कायद है कि मतलब उनकी मेरे को उनकी तारीफ करने के लिए अल्फाज ही नहीं है। ऐसी शख्सियत जो हर दिल अजीज शख्सियत जो हर दिल में बसती है, मेरे को इंशाल्लाह उम्मीद है कि जरूर ये करेंगे। आप तमाम से भी मेरी गुजारिश है, आने वाले इलेक्शन में भी आप लोग आगा रहिए। देखिए हमारा वोट एक तरफ जाना चाहिए, ऐसी कोशिश की जा रही है कि कुछ सियासी ताकतें वोट बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो केसीआर की क़यादत में जो अक़लियत आज महफूज है, आज पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना एक मिसाल बन के रह गई है। इस मिसाल को दूसरी रियासतें लेके तेलंगाना की जैसी हुकूमत हमको चाहिए बोल के आज लोग बोल रहे हैं। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है, एक जहती का मुजाहरा कीजिए। ऐसी हुकूमत जो एक सेकुलर हुकूमत, तेलंगाना रियासत जो 29 रियासतों में एक मिसाल है हिंदुस्तान में, आज केसीआर साहब की क़यादत को फिर हमको मजबूत करने की जरूरत है। आप तमाम भाइयों बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से मेरी गुजारिश है, एकजुट होकर काम करिए, एक जहती का मुजाहरा करिए। एक छोटी सी बात आप तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं। देखिए दिगर कौमें हैं तेलंगाना रियासत में, कुछ कौमें 3% है, उनके 60 एमएलए, आज 14-15% आज अक़लियती जो है यहां पे मौजूद है तेलंगाना रियासत में, लेकिन मैं सिर्फ एक एमएलए हूं। मैं केसीआर साहब से, हरीश राव साहब से गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए टिकट मुसलमान कायदों को देके उनको असेंबली तक पहुंचाया जाए, ताकि अक़लियतों की और मजबूत तरीके से नुमाइंदगी हो। हमारे सिख भाई यहाँ पे मौजूद है, हर तरीके से सिखों के लिए हमारे पास गुरुद्वारा बनाया गया। गुरुद्वारे के लिए 15 लाख रुपए सीडीपी फंड से हरीश राव साहब मेरे को पैसे दिए, बाद 15 लाख रुपए गुरुद्वारे को मैं अपनी तरफ से दिया। ऐसे हमारे तमाम एमएलए गुरुद्वारे के लिए हर तरीके से आज सिख भाइयों की मदद कर रहे हैं। आप तमाम को एक और बार बोलता हूं, जो बोले सोनिहाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। आज तमाम माइनॉरिटी भाई, ना के मुसलमान, सिख रहने दीजिए, जैन भाई रहने दीजिए, क्रिश्चियन भाई रहने दीजिए, मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, एकजुट होके जो एक सेकुलर क़यादत पूरे हिंदुस्तान में केसीआर की है, बीआरएस पार्टी को कार के निशान को वोट देके हर तरीके से मजबूत कीजिए। जो नए चेयरमैन बने हैं, मैं केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो इतने बड़े पैमाने पे माइनॉरिटीज को मौका दिया गया रियासत तेलंगाना में, एक कैबिनेट रैंक का ओहदा देते हुए तमाम नौजवानों को आज जिस तरीके से केसीआर साहब ने किया, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये मेरे को मौका अदा करने के लिए जनाब महमूद अली साहब का, जनाब हरीश राव साहब का और हमारे लोकल एमएलए नागेंद्र भाई का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करते हुए ये मौका देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, शुक्रिया शकील साहब। जरा खवातीन को नहीं दिख रहा, आप लोग इधर से हटिए ना प्लीज, प्लीज जरा खवातीन को नहीं दिख रहा। मैं जनाब दानम नागेंद्र साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्याल जरा हटिए ना, खवातीन लोग को नहीं दिख रहा, जरा प्लीज प्लीज थोड़ा रास्ता दीजिए। सर सीए गारू, सीए साहब जरा हटाइए ना, आप लोग बोल जरा हटो ना, खवातीनों को नहीं दिख रहा भाई, मेहरबानी करके। हम इतनी उन लोग इतनी ख्वाहिश से आए हैं गुलपोशी के लिए, सब की देखने के लिए, आप लोग आधे ठहर गए तो कैसा, जरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। यहाँ आए हुए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों और ख़वातीन हज़रात, आज के पूरे नौशा कम से कम एक 10 नौशाओं का जो है
आज हरीश राव साहब के सरफरस्ती में उनका गुलपोशी हुआ और हमारे बड़े भाई महमूद अली भाई और अर्दिल अजीज नेता हरीश राव साहब और यहाँ पर मेरे पार्लियामेंट के मेंबर हमारे रंजीत रेड्डी साहब, मेरे साथी एमएलए शकील भाई और बाकी हमारे साथी एमएलएस, एमएलसीज, चेयरमैन, सभी चेयरमैन्स का जो गुलपोशी हुआ उनको मैं दिल की अंतर गहराई से उनका शुक्रगुजार और मुबारक बहुत देते हुए, आप सभी लोगों को मालूम है जब से रियासत तेलंगाना में अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर एक हिंदू मुस्लिम के अलम बरदार KCR साहब जो है सत्ता में आने के बाद में माइनॉरिटियों की माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इतने कामों को जो अंजाम दिया है, आज अपने माइनॉरिटी भाइयों के ऊपर जो है, माइनॉरिटी नहीं बल्कि STO, SCO, BCO, हम सबके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी है, ऐसी हुकूमत को जो है हम साथ देना और ऐसी हुकूमत को अगर हम बचाएंगे अल्लाह के फजल से जो है फिर आने वाले दिनों में हम लोग महफूज रहेंगे और रियासत तेलंगाना भी महफूज रहेगा। लेकिन जो है बदकिस्मती से हिंदुस्तान के अंदर एक जो फिरका परस्त ताकत है और यहां पर जो है दोनों भी नेशनल पार्टीज कांग्रेस और बीजेपी जो लोग जो है आज अहल फहल बग रहे हैं, जो अनाप शनाप जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के लिए हो, हरीश राव साहब के लिए हो, KTR साहब के लिए हो और हमारे यहाँ पर रियासत रहने वाले मिनिस्टरों के लिए हो जो बकरे हैं, उनको जवाब देने का जो सही वक्त आ चुका है। आप लोग जो है एकजुट होकर जो है आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके के साथ हमारे कोई माइनॉरिटी भाइयों बहनों कभी जाके CM साहब को एक मारूजा नहीं दिया, उन्होंने जाकर बोला हमारी बच्ची की शादी है, हमारी बच्ची की शादी के लिए पैसा दो। आपकी माशी हालात को मद्देनजर रखते हुए चीफ मिनिस्टर साहब जो है शादी मुबारक का एक जो काम लाकर जो है आज फकर के साथ हमारे माइनॉरिटी भाइयों का बहनों का जो है शादियां आज हो रहे हैं। उसी तरह जो है अपने तालीम के लिए आगे दुनिया के हम लोग देखते थे रियासत तेलंगाना ही लेके बन के जो है हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के अंदर जो तालीम कम था, तालीम नहीं लेते थे, इसलिए कि उनके माशी हालात के मद्देनजर रख के उनके बुजुर्गों ने जा भाई कुछ ना कुछ काम कर ले, क्यों ये पढ़े उड़े से आने का नहीं, ये जाने का नहीं। लेकिन ऐसे चीजों को मद्देनजर रखते चीफ मिनिस्टर साहब ने सोचा अपने माइनॉरिटी बच्चों के लिए माइनॉरिटीज का स्कूल खोलेंगे, उनको आगे जाके जो है माइनॉरिटीज को जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप देकर उनकी अच्छी तालीम होने से उनकी घरों के अंदर एक बरकत आएगी, घरों के अंदर एक रोशनी आएगी। इन सारे चीजों को काम करने वाले हिंदुस्तान की तारीख गवाह है, एक ही शख्सियत है, वो है KCR साहब है। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, एक ऐसा नेता है हिंदुस्तान के अंदर और खासकर जो रियासत तेलंगाना आने से पहले सर पे कफन बांध के निकला, उन्होंने सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है बाजू है कातिल है कितना जोर है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने सर पे कफन बांध के निकला, शहर हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना ही नहीं, आने वाले दिनों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर अपना जो है झंडा फहराने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब एक कफन बांध के निकले। अगर हम साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला जरूर जो है हिंदुस्तान के अंदर भी BRS पार्टी इक्तदार में आएगी, BRS पार्टी एक ऐसी पोजीशन पे आएगी, एक डिसीजन फैक्टर होगा। BRS पार्टी जो है ऐसा करना है तो माइनॉरिटी भाइयों से मेरी गुजारिश है, माइनॉरिटी नहीं ST, SC, BC इतने काम उन्होंने दिया। कल से चालू होगा BCओं का फाइनेंस का लोन मिल रहा है 1 लाख रुपए। अभी हरीश राव साहब मुझे बता रहे थे 10 लाख रुपए जो है दलितों का भी चालू हो गया। डबल बेडरूम है, एक पहले से जो है अगस्त से डबल बेडरूम का भी चालू होगा। ऐसे काम करने वाला कोई भी आज बताइए तारीख के अंदर गुलिस्ता 60-70 सालों से जो भी तेलंगाना में सत्ता में थे एक भी ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज तेलंगाना में रियासत तेलंगाना में अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब सत्ता में आने के बाद में उन्होंने ऐसे कामों को अंजाम दिया, सुनहरा तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर जो है, और तेलंगाना जिस तरह लाचार था आज तेलंगाना फकर से कह रही है कि तेलंगाना में रहने वाले हर आदमी जो है हम तेलंगाना है, तेलंगाना वासी है बोल के बोलते हुए आज ऐसे कामों को दे रहे। मैं इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ऐसे आजकल जो है नामाकुम पल पुले आते रहते जाते जाते पानी के बुड़बुड़ों के सर के, आज हमारा एक ही इरादा होना चाहिए। KCR साहब को अगर बचाएंगे तो रियासत तेलंगाना बचेगा और हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब होगा। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा
केसीआर साहब के सरपरस्ती में काम करेंगे, केसीआर साहब का हाथ मजबूत करेंगे और जो है यहाँ पर कांग्रेस वाले जो अनाप शनाप जो बकरे उनको भी जवाब देंगे। हमारे कुछ माइनॉरिटी भाई जो है कांग्रेस के बहकावे में आना चाह रहे, मैं उनको आगाज करना चाहूंगा। आप लोगों को मैं ये करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, ऐसे बातों में मत जाइए, कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। आज केसीआर साहब अपने माइनॉरिटी भाइयों के लिए उन्होंने कितना काम किया। माइनॉरिटियों में एक खास खूबी है, कभी किसी के साथ साथ देंगे तो मरते दम तक छोड़ने वाले नहीं है, वो मुझे उम्मीद है। तो इसीलिए आप लोग भी आने वाले दिनों में आप लोग भी एक ऐसा कसम खाइए, केसीआर साहब का हाथ मजबूत करने के लिए कोई भी हम लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे। केसीआर साहब के सरपरस्ती में फिर एक बार इंशाअल्लाह ताला फिर एक बार बीआरएस पार्टी इख्तियार में आएगी और जो है हिंदुस्तान के अंदर भी हम हुकूमत चलाने के पोजीशन पे आएंगे। इन जो मौका मुझे दिया सबका दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूं। केसीआर साहब, केसीआर साहब, जय तेलंगाना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब रंजीत रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जनाब रंजीत रेड्डी साहब। सबको सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक गुजारिश करता हूं, मैं शकील भाई और नागेंद्र भाई के ये सब तो बात नहीं कर सकता हूं। स्टेज पे है जनाब अपना होम मिनिस्टर मोहम्मद अली साहब, हमारा बड़ा भाई पार्टी के बुजुर्ग फिनेंस मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब, बड़ा भाई नागेंद्र एमएलए साहब, एमएलसी फारूक साहब, शकील साहब, सलीम साहब, आज नया टीएस आईडीसी का चेयरमैन जो शपथ लिया उनको मैं शुभकामना बोलते हुए आने वाले दिन में मैं एक बात तो सही बोल सकता हूं, हमारा देश में इतने राज्य है, ऐसा एक राज्य भी नहीं है पूरे देश में जहां अपना माइनॉरिटीज के भाई बहन होने दो, यूथ होने दो, मुस्लिम माइनॉरिटीज होने दो, हमारा सिख भाई होने दो, ऐसा सब जगह एक जगह में हिंदू मुस्लिम सिख सब जना इतना अच्छा रहने का एक ही राज्य है, वो राज्य है तेलंगाना सरकार है। इसका 100% अपन एक ही बात बोल सकते हैं, तेलंगाना में जब से बीआरएस पार्टी की सरकार है जब उस दिन से सब लोग इतना खुशी है, हमारा इसमें कुछ ही भेदभाव नहीं है, सब लोग एक ही है। केसीआर साहब वही बोलते रहता, जो भी मत का होने दो सब हम एक ही है, सब भाई बहने हैं। जो 9 साल में इतना अच्छा पीसफुल है तेलंगाना राज्य पूरा, ये तेलंगाना राज्य में इतने लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आ रहे सो है, ये पूरा आ रहे हैं इधर अच्छा पीसफुल है बोल के, ये हम डेफिनेट एक क्रेडिट तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अपना राज्य को भी अपने सरकार को भी देना पड़ता। आज माइनॉरिटीज मुस्लिम माइनॉरिटीज होने दो, सिख होने दो, हमारे सिख के चवनी के भाई है, इतने साल से जो लड़े हैं हम पहली बार उनको पटास दिए थे। आज हमारे मुसलमान भाई बहनों तो सब लोग इधर है, सबको मालूम है शादी मुबारक जितना इंपॉर्टेंट है। जब से शादी मुबारक अमल हुआ ये राज्य में सब जगह सब घरों में जितने भी शादी हैं सब लोग खुशी में है। क्यों बोल तो जो भी 1 लाख दिए सो है वो फैमिली कितना खुश है आप लोगों को मालूम है, हमारे को भी मालूम है। आज अभी सलीम भाई से बात कर रहा था, हज कमेटी पूरा देश में ऐसा जो एक भी राज्य भी नहीं है जहां हज कमेटी भी लगाए सो है। हज कमेटी लगा के लोगों को बुला के कैंप्स लगा के कैसा जाना कैसा आना वहां जाके कैसा मसलना ये पूरा समझा रहे। क्यों समझा रहे? आपका जाना आना ठीक रहना, आप सब लोग खुश रहना बोल के इतना कर रहे। जो सरकार केसीआर की सरकार कर रहे, ये हम सब साथ देना केसीआर साहब को। आने वाले जो भी सियासत होने दो हम केसीआर के साथ ही रहना। ये सियासत है, आते जाते राजनीति करते जाते। फिर मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं, जब भी सियासत होते फिर 5 साल के बाद ही सियासत होते। ये 5 साल में 4.5 साल सब जने साथ रहे तो अच्छा रहता। दूसरे राज्य में क्या हो रहा, सियासत होने नेक्स्ट डे से गड़बड़ शुरू कर रहे। मैं तनवीर भाई को और एक बार खुशी का ये मौके पे शुभकामनाएं देते हुए मेरे क्या मौका दिए सो खुशी है बोल के बोल रहे हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज। अब मैं जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर रियासत तेलंगाना से गुजारिश करूंगा
कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जरा मेहरबानी करके आप लोग जरा बाजू आ जाइए, खवातीन को मुश्किल हो रही है। मेहरबानी करके सिर्फ केसीआर साहब जिंदाबाद, किसी का जिंदाबाद नहीं, केसीआर साहब जिंदाबाद। मशीराबाद एमएलए जनाब मोटा गोपाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो डाइश पर तशरीफ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू व नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे जो माइनॉरिटी चेयरमैन है उन्हें सालपोशी और गुरुपोशी करने के लिए हमारे स्टेट के डायनेमिक लीडर जो 2001 से तेलंगाना तहरीक को ताकत बख्शने वाले लीडर, डायनेमिक तरीके से हर एक की सपोर्ट करने वाले लीडर हमारे हरदिल अजीज टी हरीश राव साहब यहाँ मौजूद है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने तेलंगाना तहरीक से ही सीएम साहब के साथ जुड़े हैं और हमेशा बहुत मजबूती से सारे कौमों की खिदमत करते हुए केसीआर साहब के हाथ मजबूत करते हैं। मैं उनका दिल की गहराइयों से हरीश भाई को मुबारकबाद देता हूं। उसी तरह हमारे एकलौते एक एमएलए, बोधन एमएलए हमारे शकील भाई साहब, जो हमें प्राउड है, बहुत हमेशा हर टाइम बड़े मुकाबले करते हुए वो मुसलसल जीत कर आ रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मुकामी एमएलए दानम नागेंद्र साहब, एमपी चौड़ला रंजीत रेड्डी साहब, मोटा गोपाल साहब मशीराबाद एमएलए, जनाब फारूक हुसैन साहब एमएलसी, और हमारे तमाम चेयरमैन, खासतौर से मैं एक बात अहम कहना चाहता हूं, आज हमारे बहुत से ज्यादा तादाद में मुस्लिम भाई है। हमारे सीएम साहब का इंसाफ और हरीश भाई का इंसाफ, हमारे पास एक बहुत बड़ा हमारा सिंगर शाही चरण यादव, शाही चरण साहब को उनके इंतकाल के बाद उनकी अहलिया को चेयरमैन दिया गया। उसी तरह हमारे फरीद भाई जो हमारे एमएलसी थे, उनके इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे साहब को चेयरमैन दिया गया। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं। तेलंगाना में जो इंसाफ है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। तेलंगाना बनने से पहले और तेलंगाना बनने के बाद जो तब्दीली है आप तमाम लोग देख रहे हैं। आज हमारे तमाम चेयरमैन की गुलपेशी गई, खासतौर से हमारे मुजीब भाई साहब जो हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी है और वो उर्दू एकेडमी चेयरमैन भी है, उन्हें मुबारकबाद देता हूं। हमारे सलीम भाई साहब जो साबिका एमएलसी है और आज उर्दू एकेडमी चेयरमैन है, और मसीउल्लाह खान साहब जो हज कमेटी चेयरमैन है, हमारे मसीउल्लाह खान साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, हमारे इम्तियाज साहब जो माइनॉरिटी क्या लिख दिया माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी चेयरमैन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन, रविंदर साहब जो हमारे सरदारजियों में एक सरदार जी है, वो भी चेयरमैन है, फूड एंड वुमेन चिल्ड्रन वेलफेयर चेयरमैन है, और जनाब राजू सागर साहब जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन, और जनाब जो तनवीर साहब है, उन्हें मैं खास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग साबिका में सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में कई चेयरमैन बना करते थे, इसलिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब और हमारे हरीश भाई साहब ने उन्हें जनाब यूसुफ जाहिद साहब जो खादी बोर्ड चेयरमैन है, एरुल्ला सिन्हा साहब डाइस पर है जो एमएडीसी चेयरमैन है, और तमाम हमारे पार्टी के इंचार्जेस और डाइस पर बैठे हुए तमाम भाइयों और आज इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहनों, दो चार बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे डायनेमिक लीडर हरीश राव साहब आपको डिटेल बताएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, तेलंगाना बनने से पहले मुसलमानों का क्या हाल था। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा हम परेशान रहा करते थे, हमेशा फिसादात हुआ करते थे, और कांग्रेस के लीडर आकर फिसाद के बाद हमारे 5 किलो चावल, 1 किलो शक्कर और दूसरे आइटम साथ में
देकर हमें दिल बहलाया करते थे। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना से फिसादात का मुकम्मल खात्मा करने वाले कोई लीडर है तो केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने हर शोबे हयात में मुसलमानों को तरक्की देने के लिए कई ये स्कीम लाए हैं। खास तौर से एजुकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे जो रेजिडेंशियल स्कूल है, आज देखिए आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है, खास तौर से माइनॉरिटीज के। 2014 से पहले सिर्फ हमारे 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 1500 से 2000 बच्चे पढ़ा करते थे। आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के साथ ही रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। 204 रेजिडेंशियल स्कूल में आज 1,40,000 हमारे लड़कियां और लड़के तालीम हासिल करें। तालीम बहुत अहम चीज है और तालीम दिलाने वाला जो होता है बहुत बड़ा महान इंसान होता है, वो हमारे महान और महान इंसान केसीआर साहब है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस 1-2 साल नहीं 48 साल हमारे पास हुकूमत की है। क्या हाल की है मुसलमानों का आप देखिए। बाबरी मस्जिद का ताला खोलने वाले यही कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे और बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले भी यही कांग्रेस के जमाने में हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, बोली जाती है। अगर कोई सेकुलर पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है और उसके महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है। केसीआर साहब ने तेलंगाना बनने के बाद इतने स्कीम लाए, खास तौर से महिला के लिए और उम्र रसीदा लोगों के लिए पेंशन का जो इंतजाम किया जाता है। साबिका में 200 रुपए मिलते थे, वो भी अकाउंट में नहीं आते थे, एमआरओ ऑफिस जाकर पैसे लेना पड़ता था और बहुत कम तादाद में लोगों को पेंशन दिया जाता था। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने अकाउंट में आज 48 लाख लोगों को ये पेंशन दे रहे हैं ताकि गरीब लोग अच्छी जिंदगी गुजारे। जो हैंडीकैप लोग हैं उन्हें साबिका में क्या मिलते थे, 500 रुपए मिलते थे। सीएम साहब ने 3000 का ऐलान किया और अभी 1000 इजाफा करते हुए 4,16 रुपए दे रहे हैं। इतना बड़ी मदद करने वाले कोई लीडर है, ये बिला मजहब और मिल्लत मिलते हैं। इंसान पेट में पैदा होने से पहले तक और पैदा होने के बाद बड़े होने तक हर घर में मदद करने वाले लीडर केसीआर साहब है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, खास तौर से हमारे मुस्लिम भाई यहाँ मौजूद हैं, ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस तरह वो कर्नाटक में जीते, वहां बीजेपी हुकूमत थी इसलिए वहां पर उन्हें वोट दिए हैं मुसलमान, मगर यहाँ पर सेकुलर लीडर कांग्रेस से भी ज्यादा सेकुलर हमारे केसीआर साहब है और बीआरएस पार्टी है। मुस्लिम भाइयों से यहाँ हमारे बहुत से नूरबाश लोग हैं, हमारे फकीर भाई भी यहाँ पर खड़े बैठे हैं बहुत से लोग। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जरूर आपके बारे में बताएंगे और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तेलंगाना में फकीर लोग बहुत ज्यादा है और नूरबाश लोग बहुत ज्यादा है। सीएम साहब ने भी कैबिनेट में एक बात कही है कि इनके बारे में मुकम्मल रिपोर्ट ली जाए, कितने लोग गरीब है, किस तरह उन्हें मदद की जाए। मैं यही बताना चाहता हूं, इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत से लोग बड़े बड़े बातें करते हैं, मगर हकीकत में किसी की मदद करने वाला लीडर है तो केसीआर साहब है। केसीआर साहब के लिए कल मुझे पूछा गया एक शेर कहिए, तो मैंने देखकर हमारे लोगों से बात कर एक शेर कहा था कि हमारे सीएम साहब के बारे में, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। हरीश भाई से कहता हूं, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल है, कांटों से भी आती है खुशबू, कांटों को भी खुशबू दिलाने वाले लीडर है तो हरीश राव साहब और केसीआर साहब है, केटीआर साहब है। ये सब मिलकर अच्छी तरीके से हुकूमत चला रहे हैं। आज इतना सुकून से मुसलमान इस तेलंगाना स्टेट में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी मुसलमान इस तरह सुकून से नहीं रहते। यकीनन मुसलमान भी बहुत गरीब है। हमारे पास सुधीर कमेटी बिठाई गई थी, उन्होंने भी कहा था कि 80 से ज्यादा गरीब मुसलमान है, इसलिए सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं ताकि उन लोगों को अच्छी तरीके से तालीम देकर आला इंसान बना जाए। और से स्कॉलरशिप में हर साल मुस्लिम भाइयों को 300 लोगों को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन भेजा जाता है, उन्हें 20 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं। हमारे आईएएस ऑफिसर हमेशा खजाने की रकम बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सीएम साहब से कहा, साहब ये 20 लाख की रकम बहुत ज्यादा है, हम बाद में इंस्टॉलमेंट में लेंगे। सीएम साहब ने क्या कहा, मैं हमारी बहनों को बताना चाहता हूं, हमारे भाइयों को बताना चाहता हूं, मैंने अपने बेटे केटी रामाराव को अमेरिका भेजा, मैंने अपनी बेटी कविता मैडम को अमेरिका भेजा, वो अमेरिका में अच्छी तालीम हासिल करके आए, मैं उनसे पैसे नहीं लिया तो गरीब आवाम से किस तरह वापस पैसे ले सकता हूं। इनको इनके खानदान की किफालत करने का मौका दिया जाए, इनको अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, ये काबिल बनेंगे, खुद भी अच्छे रहेंगे और अपने खानदान को भी जरूर डेवलप करेंगे। सीएम साहब का जो दिल है वो दिल किसी का नहीं है। हमारी बहनें यहाँ मौजूद है, शादी मुबारक स्कीम की बात करता हूँ। साबिका में क्या मिलते थे, आपको कुछ नहीं मिलते थे। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद
पहले 51,000 रुपए का ऐलान किया, आज 1,01,16 रुपए देते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। साबिका में कहीं किसी स्टेट में कांग्रेस वाले आकर आज बड़ी बात करते हैं, सबसे बढ़ के धोखा देने वाले, सबसे बढ़ के तबाह करने वाले हैं मुसलमानों को या सारे लोगों को, वही कांग्रेस पार्टी है। आज सारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में दूसरे कंट्रीज को देखिए, सबसे पहले आजाद होने वाली कंट्री हमारी हिंदुस्तान है। आजादी मिलने के बाद से हमारी क्या तरक्की आई है बोले, आप कंपेयर कीजिए अमेरिका से, चाइना से कंपेयर कीजिए, कई कंट्री से कंपेयर कीजिए। सिंगापुर कब आजाद हुआ, उसके बाद उनकी तरक्की देखिए। ये कांग्रेस हाल बड़े बड़े बातें करती है, मुसलमानों को बहलाने के लिए आती है। बीजेपी तो यकीनन हिंदुस्तान को बर्बाद कर चुकी है, वो एंटी मुस्लिम पार्टी भी है, हमेशा लोगों को आपस में भिड़ाकर हुकूमत करती है। उसको तो सब मुसलमान हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही रहते हैं, मगर कांग्रेस के खिलाफ भी मुसलमान है। इसलिए है कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों की तरक्की पर तवज्जो नहीं दी, हमेशा लोगों को आपस में भिड़ाकर। रेवंत रेड्डी आकर कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं पावर के बारे में। कुछ दिन पहले हमारे सीएम साहब ने 24 घंटे करंट देने वाले सीएम है तो केसीआर साहब है, फार्मर्स को भी करंट देते हैं। आज हमारी स्टेट में देखिए, हैदराबाद में देखिए, साबिका में करंट का बड़ा प्रॉब्लम होता था, और सारे इंडिया में सरप्लस स्टेट है तो हमारी तेलंगाना स्टेट है जहां पर 24 घंटे करंट दिया जा रहा है। उसी तरह हैदराबाद के पानी पीने की बात करता हूं, मिशन भगीरथ के तहत सीएम साहब ने सारे तेलंगाना में घर घर तक टैप प्रोवाइड करने वाले सीएम है वो केसीआर साहब है। हमारी स्टेट में नलगुंडे के अंदर फ्लोरेसेस का पानी था, वहां लोग के पाँव भूल जाते थे, बीमार हो जाते थे, मगर 65 साल में कांग्रेस ने मसला हल नहीं किया। हमारे आनंद सीएम साहब ने पानी का मसला हल किया। हैदराबाद में भी पानी की बहुत किल्लत थी, हमेशा रात के 2 बजे 3 बजे पानी दिया जाता था, आज आराम से पानी मिल रहा है, रोजाना पानी मिल रहा है और फ्री पानी मिल रहा है। हिंदुस्तान में किसी स्टेट में फ्री ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, अगर फ्री ड्रिंकिंग वाटर है तो हमारी स्टेट में। सारे हिंदुस्तान में जितने स्टेटों में स्कीम्स है, अगर उसे कंपेयर किया जाए, सबसे ज्यादा वेलफेयर स्कीम हमारी तेलंगाना स्टेट में। इसलिए हमारे मुस्लिम बहनें यहाँ मौजूद है, शकील भाई भी बता चुके हैं, केसीआर किट जो दिया जाता है, आज हरीश भाई साहब तो हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद बहुत डेवलपमेंट लाए, बस्ती दवाखाने खुल चुके हैं हर शहर के अंदर, हर जगह। जिस तरीके से उन्हें जो भी टेस्टों की जरूरत है, एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं। जब भी हम हरीश भाई के साथ दवाखाने जाते हैं, खासतौर से नीलोफर, कोरंटी, कई सरकारी दवाखानों पर जाते हैं, वहाँ हरीश भाई बाज़ाब्ता पेशेंट की लिस्ट देकर उनसे फोन कर बात करते हैं कि अम्मा आप कुछ पैसा खर्चा किए गया, आप यहाँ कितने दिन रहे। वो कहते हैं कि हम 1 महीना रहकर ट्रीटमेंट लिए, 1 रुपया खर्चा नहीं किए, डॉक्टर बहुत अच्छा सपोर्ट किए, यहाँ का सुप्रिंटेंडेंट बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। बाज़ाब्ता उन्होंने हर जगह सब लोगों से बात कर ही जो भी इंस्ट्रक्शन देना है देते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सरकारी दवाखाने इतने अच्छे बन चुके हैं कि हमें प्राइवेट दवाखाने जाने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इलेक्शन जब आता है लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे बताते हैं, जो इंसान को, एक बात देखिए, हम लोग बड़े लोगों से सुन चुके हैं, एक बार किसी से धोखा खाने के बाद बार बार धोखा नहीं खाना चाहिए। 1 साल 2 साल नहीं, 47 साल हुकूमत की है। आज हम लोगों ने, हमारे सीएम साहब ने, हमारे मिनिस्टर्स ने 9 साल के अंदर जो कारनामा किया है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती है। आज 9 साल के अंदर जो तरक्की हुई है उसकी मिसाल नहीं ले सकते हैं। आज हमारी स्टेट का लैंड ऑर्डर, फ्रेंडली पुलिस, हर तरीके से, खासतौर से महिला हमारे बड़े सेफ है। यहाँ पर शी टीम भरोसा सेंटर बनाकर सीएम साहब ने महिला को खासतौर से पुलिस के अंदर भी 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसलिए मैं तमाम बहनों से कहता हूँ, भाइयों से कहता हूँ, आने वाला टाइम इलेक्शन का है, ये लोग खाली बातें करते हैं। जिस तरह हमारे सीएम साहब ने, खासतौर से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने यकीनन जिस तरह काम कर रहे हैं, और हमारे आईटी मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर, सिटी के म्यूनिसिपल मिनिस्टर KT रामाराव भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हुए शहर को बहुत डेवलप कर रहे हैं। इसलिए आज की मीटिंग के अंदर हमारे जो चेयरमैन है उन्हें गुलपोशी की गई है, शालपोशी की गई है, उसके लिए मैं हरीश भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम लोगों से कहता हूं, ये जो लोग पहले हुकूमत कर चुके हैं, बट्टेबाजी की हुकूमत कर चुके हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, अगर कांग्रेस अच्छी होती तो आज हमारे मुसलमान इतने गरीब नहीं होते थे। इन्होंने 1-2 साल नहीं, हमारी स्टेट में 48 साल हुकूमत की है, और आज आकर कहते हैं कि आने वाले टाइम पर हमें मौका दीजिए। क्या मौका देंगे आप बताइए? आपके साथ हमेशा धोखा होता रहा है, आपके साथ क्या कहिए? सीएम साहब ने, हमारे सीएम साहब का यही मकसद है
हमारी स्टेट बिला मजहब मिलत होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहना चाहिए, सब मिलकर तरक्की करना चाहिए। अगर कहीं गंगा जमुना तहजीब की हुकूमत है तो हमारी स्टेट के अंदर है। आज हमारी स्टेट में रात के 2 बजे भी लोग पीसफुल तरीके से बाहर निकलते हैं, हमारे बहना बाहर निकलते हैं। इसलिए मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ, खासतौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने इस्लामिक सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन अलॉट की है। इंशाल्लाह हरीश भाई से फंड लेकर बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। अजमेर रुबात का फाउंडेशन भी इंशाल्लाह इस महीने में डाला जाएगा। उसी तरह नारायणपेट आशुर खाने की तामीर मैं समझता हूँ मुहर्रम के 10 तारीख के बाद उसका फाउंडेशन डाला जाएगा। और हमारे स्टेट में जितने स्कीम्स है, जितने वेलफेयर स्कीम्स है, बिला मजहब मिल्लत है। आज हमारा बजट, आपसे एक ही बात बताना चाहता हूँ, खासतौर से माइनॉरिटीज भाई बहन बहुत यहाँ पर है। यकीनन हमारे नूरवाज भाई को सब सीएम साहब ने खासतौर से कैबिनेट के अंदर हमारे हरीश भाई थे, उनके लिए एक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की बात की है। हमारे फकीर भाई भी है, बहुत से तादाद में बहुत गरीब है, उनके लिए जो भी माली मदद होगी मैं हरीश भाई से गुजारिश करना चाहता हूँ उनकी भी मदद कीजिए। सीएम साहब का एक ही मकसद है, हमारी स्टेट में रहने वाले अच्छी और खुशहाल जिंदगी गुजारे। आज हमारी स्टेट में वेलफेयर जो स्कीम है बिला मजहब मिल्लत हर एक को मिलते हैं कई स्कीम। उसके अलावा माइनॉरिटी का बजट हमारा 2200 करोड़ का बजट है। आप कांग्रेस हमसे पहले 2004 से 2014 तक कांग्रेस ने हुकूमत की, उन लोगों ने 10 साल में जो खर्चा किया है, हमने हमारे सीएम साहब ने 1 साल में उससे ज्यादा अक़लियतों पर खर्चा करके बताया है। हमारे कारपोरेशन चेयरमैन भी रात दिन मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए तमाम लोग, खासतौर से हमारे हरदिल अजीज डायनेमिक लीडर हरीश बाबू को सुनने के लिए बहुत बेचैन है। मैं यही चाहता हूँ जितने अच्छे लीडर हैं हमारे पास, जितना अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेटों में लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं, हमारी स्टेट में जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वो उसकी मिसाल नहीं दे सकते। इसलिए मैं तमाम भाइयों से, चूंकि ये बड़ी माइनॉरिटी मीटिंग नहीं थी, ये मीटिंग खास तौर से हमारे चेयरमैन को आप देख लीजिए, हमारे यूसुफ जाहिद साहब है, खादी बोर्ड चेयरमैन है, आज तक किसी को खादी बोर्ड चेयरमैन नहीं मिला, हमारे सीएम साहब ने उन्हें दिया है। इससे पहले इंडस्ट्री चेयरमैन दिए। हर तरीके से मुसलमानों को हर शोबे हाथ में तरक्की दिलाना बीआरएस पार्टी का फर्ज है। मैं फकीर भाइयों से गुजारिश करता हूं, आपके बैनर देख चुके हैं, अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब बात करेंगे, आपके बारे में बताएंगे। इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा आपके तकालीफ दूर करने की कोशिश की जाएगी। साबिक़ा में आज हम जो आप लोग फकीर तबके से लगे हुए हैं, आपके लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, आपके बच्चे आला तालीम कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर अच्छी तालीम हासिल कर आपकी किफालत कर सके। आप लोगों से गुजारिश है कि आप तशरीफ रखिए। अभी हरीश भाई डैश पर आएंगे। मैं हमारे डायनेमिक लीडर, डायनेमिक मिनिस्टर फाइनेंस जिसके हाथ में है, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो आपको मुखातिब करें और आप उनकी बात प्यार से सुनिए। वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाले लीडर है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय हिंद। भाई जरा 2 मिनट बैठो प्लीज। नागेंद्र ने 2 मिनट बैठो, 2 मिनट, 2 मिनट। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। तमाम बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, आप सबका सलाम अलैकुम। जरा भाई लेट हो रहा है, 2 मिनट प्लीज। अपने होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब, यहाँ के लोकल एमएलए और सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर दानम नागेंद्र साहब, मुटा गोपाल साहब, अपने एमपी रंजीत रेड्डी साहब, अपने माइनॉरिटीज के शान है, अपने बोधन के एमएलए हमारे भाई शकील भाई, और
तमाम चेयरमैन, आज ये प्रोग्राम इसलिए रखे हैं, माइनॉरिटीज से इतने लोग चेयरमैन बन चुके हैं, वो सबका आज गुलपुशी करना है, वो सबका आज इज्जत करने के लिए ये प्रोग्राम आज रख चुके हैं। और हमारे सीनियर लीडर फारूक हुसैन साहब जो एमएलसी थे, और तमाम चेयरमैन सलीम साहब, मुजीब साहब, मुसीला साहब, इम्तियाज साहब, तारिक अंसारी साहब, और आज जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन चेयरमैन अभी चार्ज लिए हैं, मेरे भाई तनवीर अहमद साहब, राजू सागर साहब, रविंदर सिंह साहब, हमारे मौलाना यूसुफ साहब वरंगल से, यूसुफ साहब, तमाम बुजुर्गों, भाइयों, और मेरे बहन भी है शाहीना अफरोज, 2001 से काम करती हैं मेरे बहन शाहीना अफरोज, और निरंजन वली साहब, जहांगीर साहब, तमाम पार्टी के सीनियर लीडर्स, भाइयों बहनों जो जिले से आए, हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, हमारे फकीर बहनों भाइयों, आप सबका सलाम। आज केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज के लिए कितना इज्जत दिए आप सब जानते हैं। आज महमूद अली साहब को पिछले टर्म में वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम भी थे, अब ये साल होम मिनिस्टर है। आज के जमाने में इतने रियासत में कहीं माइनॉरिटीज को होम मिनिस्टर बना रहे, बोले तो सीएम साहब ने अपने लिए इतना इज्जत दिए हैं, अपने सबको मिलके देख रहे हैं सीएम साहब। जो गंगा जमुना तहसीब बातों में नहीं, कामों में सीएम साहब ने करके दिखा रहे। आज हिंदू लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाए, तो हमारे मुस्लिम बहनों का शादी के लिए आज शादी मुबारक स्कीम सीएम साहब ने खोले हैं। जैसा हिंदू के लिए, हिंदू गरीब लोगों के लिए काम करते, वैसे ही मुसलमानों में जो गरीब है उनके लिए भी सीएम साहब ने स्कीम खुले हैं। आज शादी मुबारक में आप जानना चाहते हैं, 2,55,000 शादियों के लिए अभी तक मदद कर चुके हैं। 2,55,000 शादी हुकूमत के तरफ से 1-1 लाख रुपया देके आज शादी करवा रहे हैं। अभी तक 2,200 करोड़ रुपया ये शादियों के ऊपर हुकूमत ने खर्च कर चुके हैं। और एक खुशी खबरी भी आपको देना है, हमारे शकील साहब ने अभी अभी पूछ रहे थे कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए भी बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के अभी शकील साहब ने पूछ रहा था। मैं आपको ये खुशखबरी देना है, महमूद अली साहब ने 1 हफ्ते पहले ही सीएम साहब से मिलके ये ऐसा स्कीम, हमारा माइनॉरिटीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, बैंक में गए तो कॉन्सेंट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था, मैं भी सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो 1-2 दिन में जीवो निकलने वाला है, सीएम साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। भाई, एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी कभी भी वो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फायदा उठाए, लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करे। कांग्रेस पार्टी बोलना एक है, करना एक है। बोलते हैं कि हम सेक्युलर पार्टी हैं, लेकिन अपने को क्या काम करे जरा आप लोग सोचना चाहिए। इतने साल से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, क्यों हमारे मुसलमान भाई अभी भी गरीब है इस देश में? क्या कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर चुके हैं? आज एक बात मैं आपको अच्छा समझने के लिए बोलना चाहता हूं। पिछले 10 साल, केसीआर साहब से पहले 10 साल
ये राज्य में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में थे। पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटीज के लिए कितना रकम खर्च करा बोले तो 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। 10 साल में सिर्फ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थे 1200 करोड़ रुपया खर्च करे। लेकिन पिछले 9 साल में केसीआर साहब के टाइम में 9100 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। कहां 1200 करोड़ रुपया, कहां 9100 करोड़ रुपया। ये हर भाई बहन सोचने की जरूरत है। मेरा शकील भाई बोल रहे 50 साल के कांग्रेस हुकूमत में भी 9000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करे, लेकिन 9 साल में केसीआर साहब ने हमारे माइनॉरिटी को, बच्चों को पढ़ाने के लिए, शादी मुबारक के लिए बहुत सारे स्कीमों के ऊपर ये 9100 रुपया आज सीएम साहब ने खर्च कर रहा है। ये साल की बोलना चाहिए। ये साल में भी हम बजट में इतने पैसे रखे 2200 करोड़, 2200 करोड़ रुपया रख चुके हैं बजट में। कांग्रेस ने 1200 करोड़ रुपया 10 साल में खर्च करे तो सिर्फ एक साल में 2200 करोड़ की बजट में हम रख चुके हैं। जो एक साल में केसीआर साहब दिए वो 10 साल में भी कांग्रेस पार्टी अपने माइनॉरिटीज के लिए नहीं दिए हैं। ये हर मुसलमान भाई बहन सोचने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे अच्छे स्कूल पूरे दुनिया में 28 रियासत है। 28 रियासत में जितने रेजिडेंशियल स्कूल है उससे ज्यादा माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल आज तेलंगाना में है। एक या दो, 203 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल सीएम साहब ने अपने बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए रखे हैं। कल के दिन अपने बच्चे डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, आईएएस ऑफिसर बनते, फॉरेन जाके बड़े बड़े नौकरी करते हैं। आज के जमाने में इंग्लिश पढ़ना जरूरत कंपलसरी हो गए। अच्छी नौकरी मिलना है तो इंग्लिश पढ़ना है। सीएम साहब ने ये सोच के उर्दू भी पढ़ा रहे, इंग्लिश भी पढ़ा रहे। सीएम साहब ने नमाज भी करा रहे, बच्चों का पढ़ाई भी कर रहे सीएम साहब ने। ऐसा कोई सोच सकते? आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाते हुए साथ में उर्दू भी सिखा रहे सीएम साहब ने। आज अपने बच्चे बहुत सारे बड़े इंजीनियर्स बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं। आज 200 रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज सीएम साहब ने खोले हैं। कोई सोच भी सकते हैं? नींद में भी कोई सोचे भी नहीं होंगे कि 200 जूनियर कॉलेज अपने बच्ची और बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने देंगे बोल के। एक भी नहीं था। पिछले कांग्रेस पार्टी के 70 साल के उनके जमाने में अपने बच्चे पढ़ने के लिए एक भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल नहीं दिए। जो 70 साल में एक भी नहीं दिए, केसीआर साहब ने 200 रेजिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल दिए हैं। आप सोचो, एक घर में एक डॉक्टर बने तो कितना रोशनी वो घर में आएगा। एक मिनट, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ओल्ड सिटी में एक बार सीएम साहब दौरा करे तो एक लड़की आई थी। उनका पिताजी बेकरी में काम करते थे। पिताजी का तनख्वाह है 5500 रुपए महीने में। पिताजी का तनख्वाह है 5500 रुपया। वो लड़की केसीआर साहब को मिलकर दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं। लड़की का नाम है सलवा फातिमा। सलवा फातिमा ने सीएम साहब को दरखास्त दी, साहब मैं पायलट बनना चाहता हूं, कितना पैसे जरूरत है? लड़की बोले कि 35 लाख रुपए का जरूरत है। सीएम साहब फौरन वो लड़की को 35 लाख सैंक्शन करा के उनको पायलट ट्रेनिंग दिलाई। वो आप जानना चाहे वो लड़की का आज क्या तनख्वाह है? वो बड़े बड़े फ्लाइट चला रही, वो लड़की का तनख्वाह है आज महीने में 5 लाख रुपया। उनका पिताजी का तनख्वाह था 5500। वो लड़की को आज पायलट बना के महीना में 5 लाख रुपया तनख्वाह उठा रही वो लड़की। जो आज 3,50,000 बच्चे
अपने माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो लोग भी ऐसे तनखे उठाने वाले हैं कल के दिन। कुछ दिए तो आज रहता कल जाता, लेकिन पढ़ाई मिले तो जिंदगी भर रहता है। वो एक बार पढ़ाई हो सके वो घर पीछे नहीं देखती, आगे ही जाते हैं। वो सीएम साहब ने एक काम कर रहा है। 3,50,000 बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के वो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर बनाने का काम देख रहे हैं। एक जमाने में सरकारी दफ्तर में बहुत सारे मुसलमान रहते थे, आज है फिर वो ऐसा जमाना लाना है। इस वास्ते अपने बच्चे अच्छा पढ़ना है, इसके लिए सीएम साहब ने इतने स्कूल खुले हैं। अपन गरीब थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे, आप नहीं पढ़ा सकते। अगर से इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े तो नौकरी नहीं मिलता, बड़े बड़े ऑफिसर नहीं बन सकते। इस वास्ते सीएम साहब ने इतना खर्च करे, 2,140,000 करोड़ रुपया अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाने के लिए सीएम साहब ने खर्च कर रहे हैं। ये आप कोई दरखास्त नहीं दिए, कोई दफ्तर में नहीं गए, कोई दरखास्त नहीं दिए, हमारे बच्चे के पढ़ाई के लिए सोचो बोल के सीएम साहब को कोई नहीं बोले। लेकिन सीएम साहब खुद चाहते हैं कि हमारा माइनॉरिटीज का पढ़ाई अच्छा हो। और एक बात भी बोलना चाहता हूं मैं, आप पूरा 28 राज्यों में, परसों के दिल्ली के सरकार ने बोला माइनॉरिटी लड़कियां सबसे ज्यादा कोई राज्य में पढ़ रहा है तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। 28 राज्य में माइनॉरिटी सबसे लड़कियां ज्यादा कहां पढ़ रहे बोले तो वो तेलंगाना में पढ़ रहा है। क्यों? सीएम साहब ने 100 स्कूल बच्चियों के लिए भी खुले हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ना, हमारे माइनॉरिटी बच्ची भी पढ़ना चाहिए बोल के 100 आधा स्कूल बच्चियों के लिए सीएम साहब ने खुले हैं। सो ये आप सब जानना चाहिए। जैसा हमारा सलवा फातिमा आज पायलट बने, वैसा 100 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में हमारे लड़की जो पढ़ रहे हैं वो लोग भी बहुत सारे पायलट बनते, डॉक्टर बनते, ऑफिसर बनने वाले हैं। सो ये सब आप जानना चाहते हैं, जानना चाहिए। भाइयों, आज बहुत सारे स्कीम, उर्दू के लिए भी सीएम साहब ने, जो पहले सीएम है, नीट में उर्दू में एग्जाम लगना है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी उर्दू में एग्जाम लगाने के लिए जो पहले सीएम है अपना केसीआर साहब ने है। भाइयों, एक बात आप सोचिए, आज 28 रियासत है अपने देश में, ऐसा कोई रियासत है जो मुसलमान सुकून से जिए, सुकून से सोए? कहीं देखो गड़बड़ है, परेशान है इस देश में। लेकिन अपना तेलंगाना में हमारे मुसलमान ने सुकून से, सुकून, बोल तुम भैया, बहुत बोलना है, मैं कुछ भूल गया बोल के मेरा सलीम भाई मुझे याद कर रहा। इमाम मौजम लोगों को 5,000 तनख्वाह पहली बार अपनी दे रहा है, और बच्चे बाहर पढ़ने के लिए 20 लाख रुपया दे रहा बोल के सलीम भाई ने याद करे। 20 लाख रुपए सलीम भाई, कोई गवर्नमेंट देते लेकिन 10 लोगों को, 20 लोगों को लेके ज्यादा बोल लेते। लेकिन सीएम साहब ने 2,700 बच्चे को फॉरेन भिजा के 20-20 लाख रुपया देके पढ़ा रहे। 2,700 बच्चे बड़े अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में जाके अपने मुसलमान बच्चे पढ़ने के लिए सीएम साहब ने 435 करोड़ रुपए अभी तक दे चुके हैं। 435 करोड़ रुपए देके 2,700 बच्चों को अमेरिका में, लंदन में सीएम साहब ने पढ़ा रहे। कोई सोच सकते? कोई मुसलमानों में गरीब लोग जाके हमारे बच्चे बच्ची अमेरिका में पढ़ना, लंदन में पढ़ना बोले तो इसके पहले कोई मौका ही नहीं था। 1 रुपया कोई सरकार देने वाले ही नहीं था। आज अपने देश में 28 राज्यों में हमारे बच्चे बच्ची फॉरेन में पढ़ने के लिए अगर से हुकूमत के तरफ से 20 लाख कहीं दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के हुकूमत में केसीआर साहब ने दे रहा है। ऐसे बहुत सारे रमजान के तोहफा मिल रहा है। अजमेर में दरगाह बनाने के लिए सीएम साहब ने 5 करोड़ रुपया सैंक्शन करे हैं। ये कोई सोचे? सीएम साहब कुछ सोचे
हमारा सेंटिमेंट है। अजमेर दरगाह में हमारे हैदराबाद से, अपने तेलंगाना से बहुत सारे लोग जाते हैं। आपके सहूलत के लिए, आपका रहने का इंतजाम करने के लिए 5 करोड़ रुपए से अजमेर में बहुत अच्छा तेलंगाना का भवन भी बन रहा है। वहां पर ऐसे काम बहुत सीएम साहब ने करे हैं। सीएम साहब ने बतकम्मा के फेस्टिवल में साड़ी देते हैं। रमजान में भी गरीब मुसलमानों के लिए सीएम साहब का तोहफा भी मिल रहा है। आज क्रिसमस में क्रिश्चियन को देते, रमजान में मुसलमान को देते, बतकम्मा दशहरा में हिंदू भाई बहनों को देते हैं। ऐसा सीएम साहब ने हर कोई के लिए सोचते हैं। अपने सीएम साहब के लिए आप सब भी दुआ करना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी वाले बहुत बोल रहा है रेवंत रेड्डी आजकल, वो खुद संघ परिवार में काम करा था। ये रेवंत रेड्डी ने पहले, इनका जिंदगी शुरू हुआ संघ परिवार से। मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी से, आप जवाब दो, ये संघ परिवार से इनका जिंदगी शुरू हुआ नहीं हुआ? कोई संघ परिवार वाले से पूछो रेवंत रेड्डी कहां पहले उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू करा, बोले तो वो संघ परिवार से कर चुके हैं। वो आरएसएस में काम करे, संघ परिवार में काम करे, एबीवीपी में काम करा। आज बोलता है, बहुत बोलता, उनका कहां से शुरू हुआ ये आप सब जानना चाहिए। केसीआर साहब ने इतना इज्जत देते हैं। आज कोई रियासत में रमजान में हुकूमत के तरफ से दावत इफ्तार देता है तो वो सिर्फ तेलंगाना में देते हैं। सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर जिले में, हर महल्ले में कलेक्टर आके, पुलिस कमिश्नर आके, आपके एमएलए आके, आपके मिनिस्टर साहब आके आपके साथ बैठ के इतना इज्जत देते हैं। ये अपना इज्जत की बात है। सीएम साहब ने जो माइनॉरिटीज के लिए जितना इज्जत आज तेलंगाना में मिल रहा है, कोई रियासत में ऐसा नहीं मिल रहा है। सो भाइयों बहनों, आज हमारे फकीर बहन भाई भी बहुत लोग आए। आपके लिए भी जो मुद्दा है, जरूर महमूद साहब, हम दोनों जाके सीएम साहब से मिलके आपका जो मुद्दा हल करने के लिए पूरी हम मदद करेंगे, हम पूरी आपका साथदार भी देंगे। सो फिर एक बार तमाम जो चेयरमैन आज हमारे भाइयों जितने भी चेयरमैन हैं, वो आप सबका मैं फिर एक बार सीएम साहब के तरफ से, पूरे पार्टी के तरफ से भी आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। जय तेलंगाना। A very warm welcome to the members of the FTCCI, members of the Managing Committee, past President, award winners, jury members, diplomats, government officials, special invitees, press and media.
May I request the dignitaries to please be seated so that we can commence the program. We are especially pleased that the Excellence Awards is taking place on the auspicious day of Guru Purnima, giving us all an opportunity to remember and acknowledge the profound impact on our lives made by our Gurus. I extend a very hearty welcome to the Honorable Minister for Industries, MANUD, ITENC, Government of Telangana, Shri KT Ramarao Garu. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and gracing the occasion. I take immense pride, sir, today in mentioning to all of you that sir have graced the occasion, and this is the third consecutive year to have you. So a big round of applause, and thank you so much, sir. Sir, the vigor and the energy with which you are leading the state in the industrial investment has left us with no choice to match up to your speed and the proactiveness for the industrial promotion. So at the FTCCI, we are doing our part. Mr. Jayesh Ranjan, Principal Secretary, would be joining us shortly. I take immense pleasure in welcoming Sri Anil Kumar Chalmala Setti, Chief Executive and Managing Director, Greenco Group. Sir, this is your maiden visit to the FTCCI event, so very warm welcome to you, and we look forward to a continued partnership with the Greenco. Thank you so much for accepting our invitation. We extend our heartfelt congratulations to all the award winners across the 22 categories. Receiving an award from the Honorable Minister is indeed a milestone in itself. We are thankful for the invaluable support of our industry partners, State Bank of India for institutionalizing an award under the startup category, gold sponsor Jivaka Industries Private Limited, Sudhakar Pipes and Fittings, Hari Om Pipes, silver sponsor PMJ Jewels, Parity Consumer Care Private Limited, associate sponsor CIL Securities, Mahalakshmi Profiles Private Limited, DSL Infrastructure and Space. So thank you all the partners for supporting us towards our endeavor. Once again, I welcome you all to the flagship event, and before we commence the event, we would like to show a short film of the FTCCI. (1917), the year when a dedicated organization, the Deccan Chamber of Commerce, was formed to encourage trade and commerce activities. The historical journey of the organization has witnessed great transformation as per the changing needs of the industry and businesses. The Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, FTCCI, a legacy of excellence, voice of the industry, representing interests of over 25,000 businesses of all sizes, sectors and regions, is empowering industry and trade of Telangana state. A world leader in pharma, a global hub for vaccine, home to all major MNCs, leader in IT exports, an emerging first stop of India. FTCCI advocates a pro-business environment, caters to the needs of MSMEs, budding entrepreneurs and traders through its advisory services in taxation, market information, industry-related issues, B2B connection. The Chamber has its nominees in the state-level advisory committees to help drive business productivity. FTCCI aids in providing certificate of origin for exporters, issues visa recommendation for business travels. The Federation imparts job skills through its dedicated skill center. It has adopted 14 government ITIs to improve the employability of students. With a uniquely global perspective, the FTCCI events reach a highly engaged audience, policymakers and stakeholders aiming towards Atmanirbhar Bharat. FTCCI to work with government, tell us and guide us कि हम लोग क्या कर सकते हैं to remain competitive, to remain better than our competition. FTCCI
for joining us, and I thank the office bearers of FTCCI for inviting me. Jai Telangana, Jai Hind. Come and be a part of this dynamic and proactive organization. Together, let's realize the vision for a progressive future. Now I invite the dignitaries to please step forward and light the lamp of success, peace and prosperity with the flame of excellence. Thank you so much. I request President, Senior Vice President, Vice President, Chair of the Excellence Award Committee and Secretary to please accompany our Chief Guest and Guest of Honor onto the stage. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome them. A special welcome to Mr. Jayesh Ranjan, IAS Principal Secretary, Industries and Commerce and ITNC. So thank you so much for gracing the occasion. I request President Mr. Anil Agarwal to present bouquet to our Chief Guest and Guest of Honor. No. But let them shift one by one. I invite President Mr. Anil Agarwal to welcome the gathering. Sri KT Ramarao Garu, Honorable Minister for Industries, MA and EOD, IT, E&C, Government of Telangana, Shri Jayesh Ranjan, Principal Secretary, Industries and Commerce, IT and EC, Government of Telangana, Shri Anil Kumar Chellamalasetti, CEO and MD of Greenco Group, my colleagues on the dais, all the dignitaries of the dais, ladies and gentlemen, good evening. Hearty welcome to the FTCCI Excellence Awards ceremony. On behalf of FTCCI, I extend my warmest greetings and gratitude to each one of you who has taken the time to join us here today. We are here once again celebrating another edition of FTCCI Excellence Awards. I am truly grateful to Sri KT Ramarao Garu, our beloved and most popular Honorable Minister, for agreeing to give away the awards for the third consecutive year.
Sir, we are most honored by your presence. And I must say that every year we are receiving more and more number of nominations for awards as the industry feels proud to receive award from you, sir. I am really proud to see there are 22 winners in various categories, and I congratulate all the winners and nominees of various awards. All the nominees who were not selected should not get disheartened and should take it in a right spirit, as Henry Ford aptly said. Failure is a simple opportunity. Failure is a simple opportunity to begin again more intelligently. Sir, I am pleased to inform you that State Bank of India has come forward to initiate a startup award. I am thankful to SBI for sponsoring the award and to Sri Amit Chingran CGM who has initiated this award. I also thank Sri Dinesh Kumar Khara, Chairman SBI, for unveiling the award. Sir, for your gesture, this will encourage the startups to compete and be recognized among the stalwarts of industry. The awards are meant to recognize, celebrate, and support the companies and individuals who made immense efforts to withstand, sustain, and exemplify in the chosen areas and their tireless contribution to industrial growth. I want to thank every organization that is part of the process, esteemed jury who has given their thoughts to the process, our partners, Excellence Awards Committee, teams at FTCCI for putting in so much thoughts and effort for making this a huge success. I thank every dignitary in the audience for joining us to celebrate the hard work and efforts of industry. A big round of applause for all the winners and nominees, please. Thank you. The state has celebrated Dasabdi Utsavalu, and my congratulations and best wishes to all on entering the 10th glorious year of state formation. What an incredible journey we had seen in the last 9 years. Gross State Domestic Product, GSDP, in 2014, it was only 5.05 lakh crore. Now in 2023, it has grown to 13.27 lakh crore. And per capita income, which was 1.24 lakh rupees, has grown to 3.17 lakh 4 in 2023. In the last 9 years, both the GSDP and per capita income have grown by more than 2.5 times. The credit of state's progress goes to our visionary, Honorable Chief Minister, his team of Council of Ministers, bureaucrats, who with their vision, mission and leadership have put the economy of Telangana not just on the track, but on a high-speed track. Sir, there is no second opinion on the fact that your charisma, dynamism and proactiveness have put Telangana in the forefront of investment destinations in India. Your recent visits to UK and US were testimony to this, and we congratulate Honorable Minister Sri KTR Garu, Sri Jayesh Ranjan ji, Sri Vishnuvardhan Reddy ji, and whole team for making stupendous efforts and bringing huge investments into various sectors, thus generating a lot of employment. Not only has the state achieved the high growth rate, but the overall progress of the state in different parameters is evident from various awards and recognition received by the state at national and international level. 5 Green Apple Awards,
for international beautiful buildings from London-based independent non-profit organization, the Green Organization. National Technology Award to our own T-Hub, which is a world-class state-of-the-art incubation center for startups. 13 awards in National Panchayat Awards in 2023. Sir, list is long and exhaustive. Sir, the National Manufacturing Innovation Survey 2021-22, conducted by the Department of Science and Technology in collaboration with UNIDO, has developed first Indian Manufacturing Innovation Index for 28 states and 6 union territories. I am pleased to inform you that UNIDO has mandated Federation to do the survey in Telangana. All over India, more than 20,000 units have been surveyed. And in Telangana alone, FTCCI has done survey of more than 1,000 units. Recently, Department of Science and Technology has released the report, which is very comprehensive and well documented. And we are proud that Telangana ranked number 3 among all the states and union territories in the country in Indian Manufacturing Innovation Index rank. I am pleased to inform that Federation has organized 3-day Industrial Innovation and Technology Expo from 28th to 30th of June at HITEX. And being our maiden expo, we are extremely happy that more than 130 exhibitors displayed their innovation and technologies, and about 9,000 to 10,000 people have visited the expo. 3 countries, Mauritius, UAE, and Belgium were also part of our expo, and 13-member delegation from Vietnam has also visited the expo. My sincere thanks to the government of Telangana, especially to Jayesh Ranjan sir and Vishnuvardhan Reddy garu, and all other government and non-government organizations for their support and cooperation. Sir, this expo was also supported by Ministry of MSME, Government of India. Sir, while you and your team are making efforts to bring investments into the state, we as Federation are also promoting brand Telangana in a very small way. In the last year, we had fruitful interactions with trade delegations and trade commissioners from different countries like Belgium, Turkey, Iran, UK, Canada, South Africa, El Salvador, etc. Consul General of India at Iran, Brazil, Peru, and Dominican Republic also visited Federation and addressed our members. They have visited at the same time, at the same day, they have visited our Federation and addressed our members, sir. The Federation also led industry delegations to Thailand and Vietnam in September and December months 2022 respectively. During the visits, besides participating in number of meetings, FTCCI Federation has also signed Memorandum of Understandings with Thai Chamber of Commerce, Indo-Thai Chamber of Commerce, and Vietnam Chamber of Commerce and Industry, Ho Chi Minh City, to promote trade and investments between the two countries. Particularly, we were promoting Telangana state in all our meetings and presentations. Sir, we continue to reach out to district level chambers and tier 2 cities for promotion of business culture and conducted training programs at Nizamabad and Warangal. This we have done with the support of Amazon. And we are also doing entrepreneur development programs at Medak, Khammam, and Karimnagar. One such program on entrepreneur development program, which is also being organized on 25th of this month in Narsapur. We would like to reach to all other tier 2 and tier 3 cities in the state and seek industries department support in this regard. Sir, we have recently inaugurated
FTCCI Pokarna Skill Center, supported by Sri Gautam Pokarna ji, wherein we reskill, upskill, and improve the employability of youth. So being from the state body, we understand and we try to bridge the gap between the available talent and the talent requirement by the industry. Sir, our health committee under the chairmanship of Sri Shekhar Agarwal is coming out with a document on Health Vision 2030, quality and affordable health for all, Telangana state. Sir, the document which we are preparing, the chief advisor is Dr. Nageshwar Reddy ji, Padma Bhushan, and more than 100 professionals have contributed to the document, including Padma Shri Dr. G.N. Rao of L.V. Prasad. Our knowledge partner is ASCII, and associated partners are L.V. Prasad and AIG hospitals. This document will be released on 12th July of this month at Federation House, and Honorable Minister of Health, Mr. Harish Rao ji, has consented to be the chief guest, and the report will be submitted to the government for kind consideration and necessary action. Sir, these are the few achievements which Telangana State and Federation have done together. But there are some pain points which I think important pain points which need your attention and intervention, sir. Sir, first of all, trade license fee, sir, it is imposed on square feet basis. Let it be manufacturing unit, IT industry, or commercial establishments. Everybody is affected by that, sir. Members are expressing their anguish at receiving notice for payment of trade license fee in lakhs of rupees. And we earnestly request you to revert to the old system of having cap on fee amount and remove the imposition of trade license fees on square feet basis. Many states have exempted or collecting trade license fee at a nominal level for manufacturing units, and we request you also to exempt manufacturing units from trade license fee. Sir, Peddapalli traders, they received the demand for trade license fee, and they were puzzling where to go, how to solve the problem when they approached Federation, and the same was brought to the notice of our Honorable Minister. Within 24 hours, the issue was resolved. No doubt, government is making maximum efforts for revival of MSME SIC units and also trying to introduce one-time settlement. And already they have introduced OTS scheme in VAT and other taxes, and also property tax, so that matter can be settled amicably. In the same manner, we request you to introduce OTS system for electricity dues, because large number of units have shut down their operations due to their inability to pay the power bills and other charges on dues. So the dues collected, charges which they are collecting are exorbitant. Sir, after 2-3 years, automatically the original amount will become double. That is the amount of charges they are collecting. So your positive consideration in this aspect will help many units revive their operations. And this will help not only to generate revenue for the government and for the DISCOMs also, and for getting our employment opportunities. Sir, one more thing. Government is releasing certain amounts of incentives, and they are not reaching the sanctioned people waiting in Syria team to receive their amounts, but are given to few units on priority basis. Sir, whatever be the reason for skipping the Syria team,
and allocation of funds to the units out of line, it is upsetting those who are waiting to receive their amounts for more than 7 years now. Request you to release the funds as per seriatim to the units and provide relief to those that are waiting since long. We are pleased to inform that FTCCI, in collaboration with Indian Institute of Economics, has prepared a report on cost of doing business in Telangana vis-a-vis other states in the country, as suggested by you in last year's award functions. Sir, we had one round of discussion with Jayesh Ranjan ji. A small tweak here and there will help the state to get further investments and will help the existing industries to competitive better in the market. Sir, we request your time to present the report for your consideration. Sir, FTCCI would like to bring to your kind notice one long pending issue with the state government. Sir, we are one of the oldest trade and commerce organization of the country, doing quality work for the industry, trade and commerce in the Telangana state. Every year, more than 20 foreign country delegations visit our federation to foster relationship with the local industry and Telangana state. Telangana state and Hyderabad, which is a world-class, which has the world-class infrastructure, but our federation has been operating and working from an old building in Red Hills for the last 40 years. Sir, you have visited our premises. CCLA recommended land allotment to FTCCI in 2017. Sir, we request you to allot as a couple of acres land through TSIIC to build a world-class facility befitting the image of Telangana state industry and commerce. Thank you. Thank you for our support. Sir, with the support of Government of Telangana, we would also like to take up cluster development activities and contribute to the growth story of Telangana. And I appeal to the government to engage more often with the federation and give us opportunity to do more for the state. Last but not the least, I want to thank the team of FTCCI for their hard work, dedication and commitment in successfully organizing and executing 3 continuous programs in the last 10 days. All the 3 programs were big programs. We have successfully organized impetus program on digitalization along with HICIA and a 3-day expo and the current excellence award now. Sir, thank you once again for gracing the occasion and presenting the awards to the winners and for making a memorable day for all of us. Thank you. My hearty welcome to all of you once again. Thank you. Thank you so much, sir. I now invite CA Arun Loharika, Chair FTCCI Excellence Award Committee for the introductory remarks. Respected Chief Guest, Mr. KT Ramarao, Guest of Honor, Mr. Jayesh Ranjanji, another Guest of Honor, Mr. Anil, other distinguished members on the dais and of the dais. Good evening and welcome to you all. I would be dishonest if I don't mention the name of 3 people without whom this evening would not have been possible. The one and only one, please stand up, madam. Mrs. Kankaria.
Second, Mr. Pawan, wherever he is, please stand up. He's not there. And the third is Sneha. I think she's also outside. Friends, Aristotle rightly said, excellence is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, and intelligent execution. It represents the wisest choice of many alternatives. Choice, not chance, determines your destiny. Recognize the efforts of organization and leaders. FTCCI honors those who have driven changes through innovation, initiatives, and advancements. These men and women with trailblazing attitude and skills have done wonders to improve business performance in their specific industry and areas of business. FTCCI aims to felicitate companies, entrepreneurs, and service providers for their outstanding performance and achievements in their respective fields. It identifies accomplishments that have a lasting impact, demonstrate the highest level of professionalism, and deliver exceptional results. The recipients of the Excellence Awards are the ones who have exhibited their skills and sensitivity as they created inspiring work to engage their communities in the newer ways. These individuals and companies belong to various categories, and to be precise, 23 categories. The winners were handpicked through a stringent and exhaustive independent process and by a jury of eminence like retired judges, retired and serving IAS officers. These names define innovation and excellence in their truest sense and carve an inspiring path for the youth and industry partners. The recognition aims to identify and encourage the industry game changers. Now, friends, I would make it short, quoting from an anecdote from our scriptures. Yudhishthira said, good and evil come from destiny and cannot be avoided. If we must play again, we must, that is all. A challenge to dice cannot in honor be refused. I must accept it. Truly, as Sri Vyasa said, there never was and never can be an antelope of gold. Yet Rama went in vain pursuit of seemed one. Surely when calamities are imminent, the judgment is first destroyed. Friends, now coming to Telangana, I've got a very few words to say. See, they say the IMF and other organizations say that India is a bright spot. But why they don't say about the states of the countries? Are we not part of the country? So the same way, Telangana is a bright spot in the committee of states. And I'll give you an example. The per capita income of Telangana is 3.17 lakh, which is much higher than the country's per capita income, which is 1.46 lakhs. It means the people of Telangana are prospering, they're happy, their per capita income is high. This is one of the metrics.
I can quote hundreds of figures. Companies like Amazon, NPCI, Microsoft are coming to Telangana. We are the leading in software exports, pharmaceuticals, and infrastructure. Now, since all the people are from Telangana, I would ask only one question. This is a quiz question. Huh? Let me see the intelligence and knowledge of people of Telangana. Name the company who invented the first private rocket and the name of the rocket. Name of the company is right, but what is the name of the rocket which they have invented? Somebody said something. No, the name is Param. So, thank you everyone for coming here and making this a grand success. Thank you. Thank you so much, Mr. Loharika, for setting the context. And we now invite Mr. Jayesh Ranjan. Mr. Jayesh Ranjan, IS Principal Secretary, Industries and Commerce, IT, Electronics and Communication Department, Government of Telangana, for the special address. Honorable Minister Shri KT Ramarao Garu, Mr. Anil Agarwal, Shri Arun Loharka ji, Mr. Agarwal, Mr. Jaydev, Anil Chalamasetti Garu, Veena Garu, Khyati Garu, all the members of FTCCI, all the invitees, and most importantly, people who are getting recognized today, people who are receiving this Excellence Awards. Warm greetings to all of you. As was mentioned by Anil ji in his opening remarks, our industry sector has continued to do well in the last 9 years. Just about 15 days ago, we celebrated the decennial celebrations, the Shabdi Utsavalu of our state. And on the 6th, we presented the annual report for the performance of last year and also what has happened in the last 9 years. And the numbers speak for themselves. In fact, for a new state to achieve so much in the industrial sector across different verticals is really remarkable. I feel very proud that I have been a part of this and the IT sector right from day one of the new state. But the real credit goes to all of you. I mean, as a government, we only have this much of role. We can create a good policy. We can ensure that the policy is implemented well. But more than that, it is entrepreneurs like you who repose faith in our state, who believe in us, who put your investment, who put your money, who create jobs, who contribute to the growth of our economy. And our Minister and Honorable Chief Minister keep telling us that your existing investors are your biggest brand ambassadors. Many of you would have noticed that in the last 9 years, we have never conducted any investment summit. The way it happens, like magnificent Uttar Pradesh and glorious Tamil Nadu, these kind of events have never been conducted in Telangana. Many people point this out and they sometimes ask me directly that why is it that you don't you have a good policy, don't you have good programs? But I tell them that we have much better policy than everyone else, but our approach is very different. Our approach is, of course, some of you would be aware, we have an Invest Telangana cell. Our focus is on direct targeting of potential investors, both domestic and overseas. But more than anything else,
we believe that our reputation should speak for ourselves. And as our Honorable Chief Minister, our Minister keeps telling us, the existing investors of your state are your biggest brand ambassadors. If you look after them well, if you treat them with respect, if you are receptive to their ideas, if you try to resolve their issues, then nothing can be more reputation building as compared to all that. And no amount of investment summits and roadshows can make up for this kind of an approach. So I feel very happy when people appreciate the fact that we are extremely accessible, we are 24/7, we are responsive, and there is a natural urge in all of us to resolve issues rather than keep dragging issues for very, very long. So I'm very happy that associations like the FTCII support us, partner with us, and help us in achieving higher and higher growth. As I said few days ago, we celebrated our 9th anniversary, and on that day, Honorable Minister also gave some glimpse of what more do we want to do. So, of course, it is very common sense as well. First of all, the sectors where we are doing well, we really want to consolidate. IT is an important sector, life sciences is an important sector, defense and aerospace is important, electronics is important, food processing, textiles. We want to consolidate in all of these. There are some sectors where we have not been able to achieve as much of success as we have in these sectors. We really want to focus over the next 5-6 years on some of these sectors. And there are certain convergences that we want very much to happen. For example, in certain areas, the supply chain is not very strong in Telangana. We want to bring the supply chain. In certain verticals, usage of technology is very limited. We want to promote higher usage of technology. So these are some of the important goals, and on some other occasion, I would like to take more time and elaborate on some of these ideas and how we want the industry also to participate in these activities, support us. But today, for the time being, I once again would like to convey my good wishes, congratulate the award winners, hope that their examples are emulated and replicated by everyone else. And thank you, FTCCI, for inviting me here. Thank you very much. Thank you so much, sir. May I now invite Shri Anil Kumar Chalmala Sethi, Chief Executive and Managing Director, Greenco Group. It has been mandated by the Honorable Minister, so 2 minutes over to you, sir. Hi, good evening all. Thanks for the members for FTCCI to having me here. And good evening all the honorable distinguished guests on this dais over here. I really congratulate the whole association and the way it's been established from more than 100 years and been. Thank you. Getting so much of engagement of the industry, trade and commerce, and working closely with the government and the. We all been witnessing in the last 9 years how the government was tremendously supporting the industry over here, and we have all been proud and happier to see how we flourished as the Hyderabad/Telangana, the growth over here. And I wish and congratulate all the awardees who have been won the awards today. Thank you very much. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri KT Ramarao, Honorable Minister for Industries, Municipal Administration and Urban Development, IT, Electronics and Communication, Government of Telangana for the special address. Good evening. Thank you. I'd like to firstly acknowledge the fact that we showed up late, but you all stayed. Thank you for that. Honorable President of FTCCI, Shri Anil Agarwalji, Jayesh Ranjanji, my Principal Secretary, Mr. Anil Chalamala Shetty, the guest of honor today. Also, we have Shri Arunji, we also have Sureshji, we have Sudhakarji, from Sudhakar Pipes, and Khyati, and to the entire family of FTCCI. Thank you for inviting me the third time, because there was a time when I was accused of not showing up for FTCCI events. But I think now that smear is gone. Now that I've done the hat trick,
मैं 3 बार आ गया, 3 बार आ गया, तो अभी तो आप नहीं बोल सकते हो कि मैं नहीं आया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तेलंगाना बनने के बाद तीसरी इलेक्शन भी आगे आने वाली है। तो जैसे मैंने हैट्रिक किया आपके साथ, आप भी मेरे साथ हैट्रिक करो और मुझे वापस लाओ, ये भी आपसे कहना चाहता हूं। And going by the applause, I'm thinking we'll come back. Just quickly, Mr. Agarwal spoke about how the state has grown by leaps and bounds. Arunji also was pointing out to how this is a bright spot for the industry across the nation. You know, blowing one's own trumpet all the time is not a very cool thing, but it's my fiduciary responsibility also to make sure that all of you understand the kind of growth that we have witnessed over the last 9 years, especially as we enter the 10th year after the formation of the state. Let me quickly highlight a few things. Of course, governance is a permanent institution. Government is a permanent institution. You know, government, the leaders who head the government might change, but it's a continuous process. Lots of times what happens is, especially from a business perspective, policy continuity is extremely important. You know, there is one government during whose tenure you would have set up an industry, and you would expect that whatever promises were made by that particular government will be kept by the succeeding government as well, irrespective of political affiliations, irrespective of you know, their overall strategies and overall worldviews. In Telangana, if you've noticed, over the last 9 years, you've seen a very unique model. I was mentioning it yesterday in a builders meeting. You know, I think most of you who are seniors, and because, you know, you work in an organization which was set up in 1971, I'm presuming that most of you are Hyderabadis and who've been here for the longest time, for 3, 4, 5 decades and more. So let me give you 2 examples that you can relate to. Back in early 2000s and late 90s, we had a chief minister, Sri Chandrababu Naidu Garu, who had a very pro-business, pro-IT image. He was considered very business savvy, he was considered very business friendly, etc. And then in 2004, we had another chief minister, Dr. Y.S. Rajshekar Reddy Garu, who came in, who had a very pro-farmer, pro-welfare, pro-rural kind of an image. So we had a chief minister who was pro-business, pro-urban, pro-business, and then we had a chief minister who was pro-farmer, pro-rural, pro-poor. But today, if you look at Telangana, what makes this unique is KCR Garu has an image of both. In fact, it's a blend of best in both. We have a pro-rural, pro-agriculture, pro-welfare image. We also have a pro-business, pro-urban, pro-development image. Now, let me substantiate and let me back that up by a few statistics. As was pointed out, the gross state domestic product of the state in 2014 was 5,000 crore. Now it's 13.27 lakh crore. It's a huge, humongous growth, highest for any state in the country. The per capita was 1,12,000 in 2014. Now it's 3,17,000, highest for any state in India today. I mean, for the 28 states in India. Let me also point out, the key sectors where we had to consolidate our strengths, where we had to ensure that all the synergies that are possible, you know, in terms of, because, you know, there is an existing ecosystem, so you'd want to build on, you know, brick by brick that was built with a great deal of love and affection, great deal of effort in the past, had to be consolidated. So if you look at it, life sciences is a sector where we certainly added a lot of vigor, a lot of strength, and today we are a formidable force, not just in India, but also in the world. We produce 40% of India's pharmaceuticals from Telangana. We also produce 1/3 of world vaccines. And next year, in fact, we'll be producing 1/2, 50% of global vaccines. Let me also share with you, we have the world's largest number of US FDA approved manufacturing facilities for any province in the world. The largest number is in Telangana, 214. The second largest is in New Jersey with 189. So we have the largest number of such world-class manufacturing facilities right here. Not only do we have these, we are further consolidating on our life sciences strengths. So we have launched India's largest medical devices park in Sultanpur, Patancheru, which is again
which houses more than 60 units now, including the world's largest stent manufacturing facility. Also now, we're in the process, the last leg rather, of launching the world's largest pharma cluster in Mucherla, which is about 30 kilometers south of Shamshabad Airport. If you've heard me clearly, you would have heard not India's largest, but repeatedly world's largest. Now, one of the things our Honorable Chief Minister believes in firmly is, if we really have to compete with the world, with the large manufacturing countries across the world, be it China, or be it the US, or any other large manufacturing country, we need to operate on scale, at scale. Only then will you be able to bring in economies of scale, compete. I remember in this exact venue about 2 years ago, when Mr. Piyush Goyal was here, he and I, we sat with the All India Med Devices manufacturers as part of the annual flagship event of Telangana government, BioAsia. I had invited Mr. Goyal, he was here. So we were having a closed door discussion. So since it was a closed door discussion, we asked the representatives of the medical devices industry to speak freely and openly. And Mr. Goyal is a very progressive man, and he was very keen to hear from the industry. This was almost, I think, right around the time of COVID, 2 साल पहले. तो वो राउंड टेबल मीटिंग थी, उसमें से एक इंडस्ट्री लीडर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है, वो खड़े हो गए, बोलने लगे कि सर बात ऐसी है कि आज मैं चाइना से कोई ग्लव या मास्क या कुछ खरीदता हूं और उसको शिप करता हूं हिंदुस्तान, हैदराबाद or wherever in India. It actually is cheaper than manufacturing here. Now you tell me what is wrong in what I said, or what, you want us to compete with Chinese, you want us to compete with other large manufacturing medical devices companies across the world. आप कहते हो आत्मनिर्भर भारत, कैसे करें बताइए? क्योंकि मैं वहां से शिप करता हूं, हजारों मील आती है, मैं टैक्सेस पे करता हूं, जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज है सब पे करता हूं, फिर भी वो चीप होता है यहां बनाने से ज्यादा है. तो दिस इज one thing that was pointed out, which really led to a lot of thinking, a lot of real churn. I mean, not just med devices. Today, India imports 78% of medical devices, 80% of edible oils, and the list goes on. The list goes on. There are several things for which we are heavily dependent. Even the pharmaceutical industry that I just talked about. Heavy dependence on importing APIs from China. So my point is, if we really have to make a statement and make an impact on the world stage, I think we have to think at scale. Our Honorable Chief Minister led a delegation to China in 2015 as part of the World Economic Forum summer event. He went to a place called Shichou. I think if I'm pronouncing it right, it's Shichou. He was amazed to see a 70,000 acre industrial park. 70,000 acres. When he came back, he told us, he said, they are on a different planet. वो अलग दुनिया में है, अलग planet में है. अगर हमारी मुकाबला उनके साथ करना है, तो हमें कुछ और ही करना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा. ये जो हम लोग कर रहे हैं दिन दिन, ये नहीं चलेगा, कुछ और ही करना पड़ेगा. The point I'm trying to make, gentlemen and ladies, is I think federations are good, sense of competition among Indian states is good, but the fact is, even after 75 years of independence, I mean, I can take relative comfort. जब अनिल जी कहते हैं, अरुण जी कहते हैं कि तेलंगाना ब्राइट स्पॉट है, मुझे खुशी होती है, खुशी महसूस होती है, क्योंकि अच्छा लगता है सुनने को कि हम बाकी राज्यों से बेहतर है. बट एक हिंदुस्तानी होने के नाते यू ऑल्सो फील बैड. अच्छा नहीं लगता सुन के कि हम 78% मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करते हैं, 80% एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं. एज ए इंडियन सिटीजन, एज एन इंडियन, you don't feel good about it. So my humble request to you is, I think Telangana should not just be a bright spot among all Indian states. हमें बाकी हिंदुस्तान को भी रास्ता दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि business on a global scale, impactful statement कैसे करना चाहिए. And I request FTCCI to start thinking big, to start dreaming big, to start really aspiring to do more things. I understand that there are impediments. I understand that there are always going to be challenges. और
काफ़ी बार मुझे ये भी सुनने को मिला कि हाँ ठीक है, पर अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज गुड, अगर पैसा बना रहे हैं, सब चल रहा है ठीक ठाक, तो ज़्यादा सोचने की क्या बात है, जो चल रहा है चलने दो। और हिंदुस्तान में एक आदत हमारी है जो सब चलता है एटीट्यूड। आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इफ इंडिया रियली हैज टू टेक इट्स प्लेस अंडर द सन in the first world where it rightfully belongs, we all have to start thinking big, we all have to start dreaming big. And I can give you 2-3 examples. There's a company in Hyderabad, Azad Engineering, I think it is called. I'm proud, they started right in front of our eyes. But today, they are working with global majors like Boeing, GE, and others. I was so impressed learning about this company and what the kind of partnerships they've been forging. Not just that, I'm equally impressed and equally proud that Skyroot, जिसका आपने जिक्र किया अरुण जी, the first Indian space tech company to have sent a rocket into the orbit came from T-Hub. And what's even more impressive is Elon Musk जैसे thought leader and a disruptor, उनको 3 अटेम्प्ट करना पड़ा स्पेस एक्स को ऑर्बिट में भेजने के लिए। बट हमारी जो हैदराबादी कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी है स्काईरूट, उसने पहले ही अटेम्प्ट में विक्रम एस करके, विक्रम साराभाई के नाम पे जो रॉकेट था, पहले ही अटेम्प्ट में उसने स्पेस में भेजा है। इन द सेम वीक वी हैड अनदर हैदराबादी कंपनी कॉल्ड ध्रुवा स्पेस which also sent nano satellites into the orbit. I'm saying if these youngsters can conquer the space, they can tread new territories, and if they can conquer the unconquered, I think most of you who are experienced, seasoned, who have had stars in their eyes at some point, I think you'll have to start grooming your next gen and grooming your own companies to take on the big boys in the world. कभी का एक बार बुरा भी लगता है. Yes, we are proud of the kind of progress Indian industry is making. Of course, we take a lot of pride. But बुरा भी ये लगता है क्योंकि आज आप देखिएगा, आपके अगल बगल में देखिए, ज्यादा दूर की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में जो फोन है, आपके हाथ पे जो घड़ी है, मैं जिसमें बात कर रहा हूं, श्योर करके कंपनी है, आपके हाथ में फोन होगी या तो एप्पल या सैमसंग या कोई और HTC या वन प्लस, और आप घर जाके देखिएगा, आप गाड़ी में जाएंगे या तो मर्सिडीज बेंज या बीमर और वॉल्वो और किया और टोयोटा और समथिंग एल्स, होंडा, कुछ लोग महिंद्रा और टाटा भी इस्तेमाल करते होंगे, बट ज्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। और घर जाके देखिएगा, ड्राइंग रूम में बैठ जाना, एक बार 360 देख लेना, कितने इंडियन प्रोडक्ट्स है ये भी देखना एक बार। आपके घर में जो टीवी है, आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है, आपके घर में जो छोटे छोटे चीज है, 70 to 85% will be imported. And if you think for a minute, and next time you go abroad, जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि हम लोग डेलीगेशन लेके गए थाईलैंड और वियतनाम, मैं सोच रहा था वहां बैठना, थाईलैंड में, वियतनाम में होटल रूम में देखना कितने इंडियन प्रोडक्ट है, शायद एक भी नहीं दिखेगा। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि हाँ, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्रेस हो रहे हैं, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड दैट वी आर रीपिंग। दिस इज बाय डिफॉल्ट। We are not doing anything extraordinary. We are not doing anything extraordinarily innovative. Unfortunately, that spark जो था, लगना था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं गया था जापान, एक 4-5 साल पहले, मैं, जयेश, हमारी पूरी टीम गई थी। मुझे वहां 2 चीज अच्छे लगे। एक तो पहले दिन हम लोग देख रहे थे, क्योंकि मैं म्युनिसिपल मिनिस्टर भी हूं, तो मैं देख रहा था सारा जगह साफ है, एकदम साफ सुथरा, क्लीन। टोक्यो में हम लोग इधर उधर जा रहे हैं, एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग, कहीं भी कोई कचरा नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे साथ एक जापानीज साथी था, वो इंडियन एम्बेसी का, उससे पूछा मैंने कि भाई क्या करते क्या हो तुम लोग, कैसे इतना साफ है? वो हंस दिया, कुछ नहीं बोला। मैं बोला एक आंख की रीत है। तो अगले दिन फिर से पकड़ लिया मैंने उसको। आई सेड हाउ डू यू कीप इट क्लीन, हाउ डू यू कीप योर सिटी क्लीन? ही स्माइल्ड अगेन, डिडंट आंसर। लास्ट डे आई सेड आई हैव टू होल्ड दिस फेलो, रियली गेट एन आंसर आउट ऑफ हिम। क्या ये लोग क्या 2, 3, 4, 5 बार क्लीन कर रहे हैं क्या सिटी को, क्या कर रहे हैं? तो आई सेड हाउ डू यू कीप योर सिटी क्लीन? ही स्माइल्ड एंड ही सेड वी डोंट डर्टी इट इन द फर्स्ट प्लेस। कॉमन सेंस है। उसने कहा कि अगर कचरा फेंकना ही नहीं है तो उठाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल लॉजिक है। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, द जापानीज माइंडसेट। द सेकंड थिंग, वी एंडेड अप एट सुजुकी फैक्ट्री इन हामामात्सु. From Tokyo, we boarded a bullet train, we went to Hamamatsu.
We met with the chairman of Suzuki. And then, before the meeting, we were told कि थोड़ा वक्त है, थोड़ा समय है, तो आप ऐसा कीजिए, वहाँ म्यूजियम है, सुजुकी म्यूजियम है, वहाँ जाके आप थोड़ा वक्त बिताइए, एक 20-25 मिनट. तो हम लोग गए वहाँ पे, देख रहे थे. मुझे थोड़ा म्यूजियम मुझे पसंद नहीं ज़्यादा. मैं बस इधर उधर देख रहा था. इतने में चिरंजीवी साहब का वहाँ पे एक फोटो दिख गया, तो मैंने एक सेल्फी ले लिया, हमारे चिरंजीवी मेगा स्टार जो है उनका. और इतने में मैं इधर उधर देख रहा था, तो देखा मैंने कि छोटे छोटे बच्चे, शायद दूसरी या सेकेंड और थर्ड ग्रेडर्स, किड्स इन सेकेंड और थर्ड ग्रेड, दे वर देयर. वो लोग टूर ले रहे हैं. तो मैं बोला यार, अगर fully grown adult like me is getting bored, or probably will get bored here, what will these kids do here? Second and third graders. So I asked this Japanese gentleman, I said, ये लोग क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, just watch. So I was observing these kids. So interesting and so very engrossing also. They went to a kiosk, like the kiosk, how you have these, diet sodas and other, small knickknacks, right? So they went to a kiosk, और इस kiosk में option दिया गया बच्चों को कि कौन सी टाइप की गाड़ी आपको चाहिए सुजुकी में, कौन सी कलर चाहिए, कौन सी मेक चाहिए, उसको कैसे आपको कस्टमाइज करना है. So they go through a series of steps, like 5 different steps, and when they hit the 6th button, वो kiosk में से उस बच्चे का नाम के साथ एक गाड़ी आता है बाहर. For example, my name is Ram. So मुझे एक Suzuki Vitara चाहिए, वो भी लाल वाला चाहिए. So I have to go through a series of steps, and then I type my name, click, and the गाड़ी comes out with a small miniature version. You get it. So I asked this gentleman, I said, what is the purpose of this? He said, most learning is incidental. Most of the learning is incidental. We make it like a joyous, playful experience, but we are inculcating design thinking from an early stage. बच्चे को हम ये उसके मन में बिठा रहे हैं कि आप भी गाड़ी बना सकते हो, जो जैसा आपको चाहिए वैसा बना सकते हो. ये कोई बड़ी बात नहीं है गाड़ी बनाना, ये बचपन से हम इंग्रेन करते हैं उसके दिमाग में. That is why Japan is one of the smartest manufacturing countries in the world. This was the message that kids were being given. And the third and the most important thing I'll tell you about Japan, which I truly admire as a country. हमारी इंडिपेंडेंस मिली, हमें हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 1947 में, आपको पता ही है. हम अभी 75 years हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. Right around the time of independence of India, Japan was the only country in World War II, around the same time, 2 साल इधर उधर, which was bombed. It was the only country in the planet that has been bombed by nuclear bombs. Hiroshima and Nagasaki, we all know. They lost millions of lives. Japan's a country whose population is 12 plus crores now. 90% of their terrain is inhospitable. वहाँ लोग नहीं रह सकते हैं, या तो पहाड़ है या जंगल है या समुंदर है. And it's a very, it's a country that has been affected by all kinds of natural forces. There are typhoons, there are cyclones, tsunamis, earthquakes, and then they were bombed. Very few natural resources. But today, they're the 3rd largest economy in the world. Why do you suppose that is? Because the Japanese have decided that their fight is against the odds. उनके पास कुछ नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, भगवान का मतलब दिया हुआ कुछ ज्यादा कुछ नहीं है उनके पास. एक ही चीज है, दिमाग है. उसको उन्होंने चलाया. And in the last 40 years, with relentless pursuit, today, look around wherever you are, you will see a Japanese product. You will see either a television or a car or something that has been made in Japan. Now, I think it is incumbent upon us to shed this conservative mindset कि हमें फिर से वो सेल्स टैक्स का क्या कह रहे थे सर आप, पर स्क्वायर फुट वाला टैक्स हटाओ. हाँ हटाएंगे, कोई बात नहीं, वो अलग बात है. बट मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा दूरंदेश की बात चले तो अच्छा है. I think we cannot be closeted, we cannot be, confined to this thinking कि मुझे महाराष्ट्र के साथ compete करना है, मेरी बिजनेस उस बिजनेस के साथ, केरल के साथ करना है या तमिलनाडु के साथ या आंध्र के साथ करना है. No, I think please start thinking global. At least next gen को थोड़ा बाहर exposure दिलाइए. Exposure visits can't be about, one meeting and then going around and, tourism देख के इधर उधर 4 फोटो लेके वापस है, वैसे नहीं. I think you really have to take our next gen youngsters, the FTCCI young team, to actually visit some of these world-class companies and focus
on making sure they come back inspired and do something truly outstanding. Because, the gentleman from SBI is here and he'll tell you, capital is not a constraint anymore. अगर आपके पास आइडिया है, अगर आपके पास दिमाग है और आपकी प्रोडक्ट में दम है, कैपिटल तो आज कहीं से आ सकता है. एक शाइनिंग एग्जांपल है हमारे गोपी यहां पे, अनिल चलमल शेट्टी. Let me tell you his story. He's a friend, so I know. Anil was also a software employee in London till 2010, I think. 9, 10? 9 or 10. His parents are doctors, so they actually gave him good education. But he's a first-gen entrepreneur. 2009-10 में उन्होंने अपनी कंपनी लंदन में चालू किया, जिसका नाम उन्होंने ग्रीन कंपनी ग्रीन को करके डाल दिया. आज Anil is one of the largest renewable energy producers in the world, not India. So even our guys can do it. And how did he raise his capital? He has institutional investors, GIC, the Singapore government company. He has Adia, he has a lot of others, institutional investors. So if he can do it, I'm sure there are many of us here who can also do it, who can also dream big. Likewise, let me also tell you, today, not only raising a capital, but also the governments across the country, be it the central government or the state government. Today we understand you better than what we understood you 30 years ago. 30 साल पहले जब एक IAS officer principal secretary होता था या commissioner of industries होता था, he used to sit in an ivory tower and you had to go and beg with them. वो license राज में आपको याद होगा, पैरवी करना पड़ता था. आज नहीं है. Today, in fact, we are coming to you. We are pushing you. Jayesh Ranjan is on his WhatsApp, I think, almost 24/7. आप सभी के, मेरे को जहां तक जानकारी है, मैं तो ये समझता हूं कि इस ऑडियंस में से कम 80% लोगों के पास जयेश का फोन नंबर होगा. He is that accessible. Governments are that accessible to you. I mean, this was never the case in the past. The entry barriers have lowered. It has become easy to do business. Today, a state like Telangana tells you, if you want to start a new factory in my state, you don't need a permission, because आपको ये सुन के ताजुब होगी. You will be surprised listening to this. About 8 years ago, when Jayesh was Commissioner of Industries, I was not the Minister of Industry then. There was somebody else. The Honorable Chief Minister KTR Garu took a review. So as part of the review, he simply asked one question to the Special Chief Secretary Pradeep Chandra, who was the man who was looking after industries then, and to Jayesh, who was the Commissioner of Industries then. And I also see Ajay Mishra ji here. Hi, sir. So he asked one simple question. KCR Garu asked one simple question. He said, why should the government give any clearance to industry? Government को industry को clearance देना क्या जरूरी है? क्यों हम लोग ये 3 महीने, 6 महीने क्यों लगाते हैं इसमें, और क्यों इंडस्ट्री को परमिशन देने की क्या जरूरत है? एक IAS ऑफिसर जिसने 15 साल, 20 साल, 25 साल सर्विस में बिताया, उसको एक नया चीफ मिनिस्टर उसके सामने बैठ के पूछता है कि परमिशन देने की क्या जरूरत है, तो जयेश और प्रदीप एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे कि अभी क्या बोलना है, अब जरूरत क्या है, कोई पूछ रहे हैं. तो देन आई थिंक दे रिकवर्ड एंड दे सेड, सर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होगी, वरना परमिशन नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है. देन सीएम सर सेड, ओके लेट्स डू वन थिंग, जैसे हम लोग राइट टू एजुकेशन किए हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, लेट अस मेक राइट टू सेल्फ सर्टिफिकेशन अ चॉइस ऑफ द इन्वेस्टर. अगर वो डिक्लेयर करते हैं कि आई एम गोइंग टू बी अ लॉ अबाइडिंग इंडस्ट्री, लॉ अबाइडिंग इंस्टीट्यूशन, देन लेट अस टेक इट एट फेस वैल्यू, सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ कर दो. साथ ही साथ, बिकॉज यू सेड we need compliance, we need information, let them also submit something online so that we have a record, we do good bookkeeping and we decide कि कौन क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. This kind of disruption and innovation in policy is what Telangana has indulged in over the last 9 years consistently. Not only in industrial policy, in TS iPass. 15 दिन में अगर परमिशन दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो 16वां दिन ऑटोमेटिक अप्रूवल है. कोई हिंदुस्तान की कोई राज आपको नहीं बताती है. और जयेश जैसे सीनियर ब्यूरोक्रेट को भी आज 1000 रुपये का फाइन लग सकता है अगर आपका फाइल उसने 16वां दिन या 17 दिन अगर उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो ही कैन बी फाइंड अ सम ऑफ ₹1000 per day. This is by statute, by legislation. No Indian state will tell you this. And most importantly, not just in industrial policy, even our building permissions today. All building permissions, again in the same model. 21 days, we promise all clearances. If you don't deliver, 22nd day, it's a deemed approval. No state in India will tell you this.
These are the disruptions our Honorable Chief Minister brought. That's why today, if somebody asks me, what is this Telangana model that you gloat about, brag about? I only say 4 things. It's holistic, integrated, it is inclusive, and most importantly, it's balanced. What do I mean? What I mean is, today Telangana, when I said Dr. Y.S. Rajshekar Reddy and Chandrababu Naidu, and the contrast between the two of them, and how Telangana is an amalgamation of the best in both. The reason why I say that is because we are less than 3% of India's population. But today, when National Panchayati Awards and National Municipality Awards are declared by Government of India, this state with less than 3% wins 30% of the awards. No other Indian state has been able to accomplish that kind of feat. We are only 2.5% of India in population, but we contribute to 5% of India's GDP. Literally, we are a 50-kilo boxer fighting in 100-kilo category, punching double our weight. Not many states in India can claim that. Most importantly, we have ensured that this development is holistic. We have not neglected any sector. Our IT sector and IT exports have risen from 56,000 crores in 2014 to 2,41,000 crores in 2023. Our IT exports have risen, but so have our agriculture exports. In 2014, we procured 68 lakh metric tons of paddy, rice. But today we procure 3.5 crore metric tons of paddy. So our balance that you see between agri and IT. Our industry has grown. $47 billion of investment has been attracted by Telangana state. As Jai said, 24% of that investment is repeat investment. Our industry has grown, has created jobs, but so has our environment. Our green cover has improved by 7.7%, highest in the country for any state. Now, this is the kind of balance I'm talking about. Our development and welfare go hand in hand. Our rural development, urban development go hand in hand. Our IT exports and agri exports grow hand in hand. Our industry and environment also grow hand in hand. That's why I call my state the most successful startup of independent India in the last 75 years. My humble request to FTCCI, I'm not happy with these relative achievements relative to other states. I think we have to do more. We have to achieve more. We have to really make an impact on a global scale. So my humble request, like I said, prepare the next gen to take on the world. Prepare the next gen to create products that will make not just Telanganites but India proud. And I hope FTCCI can drive us in that direction. You mentioned a couple of things, Anilji. I will, of course, take all of those issues up with you and your office bearers. I'll also have to run it by the Honorable Chief Minister before I can make any firm announcement here. But yes, the OTS that you mentioned, I will make it happen. I've already informed Jayesh to take up the matter. The one-time settlement of pending electricity arrears, we'll take it up, we'll get it done. But the बाकी दो चीज़ आपने बताया, मैं उसके बारे में मैं आपको अलग से privately बोलूँगा, and we'll make it happen. But just that we need our boss's blessing. So thank you FTCCI for inviting us. This is a hat trick, like I said, and I hope to come back next year as well and present the awards. Thank you. Jai Telangana. Can we have a bigger round of applause for the chief guest? Thank you so much, sir, for your ever encouraging words. FTCCI extends its sincere gratitude to the exclusive awards committee consisting of experts. We especially thank our eminent and distinguished jury members for their expertise and unbiased selection of the awards every year. We would like to acknowledge the eminent jury members, and may I invite Shri Ajay Mishra, IS retired, who's present here with us today. Sir, please come up on the stage, and I request the chief guest and the dignitaries on the stage to please step forward so that we can commence the award ceremony. Do we have any other jury members? Other jury members?
We would also like to acknowledge our other eminent jury members who are not present today. Shri S. Govindarajulu, retired Judge High Court of AP. Shri Chella Kondanada Ram, retired High Court of Telangana and AP. Shri Vikas Raj, IS Chief Electoral Officer, Principal Secretary General, Administration Department. Dr. M. Gopalakrishnan, IS retired. And Dr. Surendra Kumar, former Director and Senior Scientist, DRDO. Let us proceed with the rest of the evening program, and I invite our Deputy CEO, Ms. Sujata, to announce the award winners. Thank you, Kathy. Once again, congratulations to all the award winners for their achievement. And now I invite their representatives to come to the dais for receiving the awards from our Honorable Chief Guest and Guests of Honor. The copies of the citations are in your hands, hence I read only the names of the award and the award winners. First, I would like to call upon Excellence in Innovative Product Service in Healthcare with the highest impact, instituted by Shanta Biotech Private Limited, Hyderabad. This goes to Relicis Medical Devices Limited, Hyderabad. And I request Sri Naveen Rajpal, CEO and Director, to receive the award. To please come onto the stage, sir. The sequence of the awards presentation is given in the citations, and request the next in line should be ready at the right side of the dais to please come on. The next award to Pandit Jawaharlal Nehru Award of Excellence in Industrial Productivity, instituted by FTCCI, goes to Vasanta Toolcrafts Private Limited, Hyderabad. And I invite Shri A. Dayanand Reddy to receive the award. Sir, there is a special request from Mr. A. Dayanand Reddy. On this auspicious day of Guru Purnima, would like to receive this award along with his Guru and his mathematics lecturer, Sri GVL Narasimha Rao Garu, because of whom whatever he is today. Yes, I did. So, Sri A. Dayanand Reddy Garu, he is on the auspicious day of Guru Purnima. He is receiving this award along with his Guru and his mathematics lecturer, Sri GVL Narasimha Rao Garu. And the next award is Amancharla Rammurthy Award of Excellence in All-Round Performance, instituted by VBC Industries Limited, goes to Mahindra and Mahindra Limited, Zahirabad. And I invite Mr. Vetsa Sita Ramaya, plant head, to receive the award. Excellence in Agro-Based Industry, instituted by India Cements Limited, Hyderabad. The award goes to Karani Spices, Warangal, and I invite Sri Devang Karani to receive the award.
T.P. Agarwal Award of Excellence in Marketing Innovation instituted by Central India Group of Industries, Hyderabad, goes to Cloud Portal Technology Solutions Private Limited, and I invite Ms. Prashanti Kolluru, CEO and founder, to receive the award. Big applause, please. We are here to appreciate the achievements of all the award winners. Excellence in Export Performance instituted by Surana Group of Industries, Secunderabad, is awarded to Nava Limited, Palvancha, Bhadradri, Kottagudem district, and I invite Sri Nikhil Devineni, Vice President, to receive the award. Raja Saheb of Itkal Award of Excellence in Export Performance under the category of Micro and Small Enterprises, instituted by Sri C.H. Venkateshwar Rao, past President FTCCI, goes to Hansa Products, Hyderabad. And I invite Sri Syed Farhan Hassan, Managing Director, to receive the award. Excellence in New and Renewable Energy Development Application, instituted by New and Renewable Energy Development Corporation of AP Limited, Guntur District, goes to Windstream Energy Technologies India Private Limited, Hyderabad. And I invite Sri Venkat Kumar Tangirala, Managing Director, to receive the award. Excellence in Employee Welfare Initiatives instituted by Kesaram Cement, Basant Nagar, goes to NCL Industries Limited, Secunderabad. I invite Sri K. Gautam, Managing Director, to receive the award. Sri Ayadevara Venkata Krishna Memorial Award of Excellence in Corporate Social Responsibility instituted by Sri C.A. Srinivas Ayadevara, past President FTCCI, goes to My Home Industries Limited, Hyderabad. I invite Sri V.S. Narang, Director, to receive the award. Excellence in Product Innovation instituted by MRF Limited, Sadasivapeta, Pedak District, goes to Shivanarayan Jewelers Private Limited, Hyderabad. I invite Sri Tushar Agarwal, Managing Director, to receive the award.